Good afternoon to all. In fact, this is an online capacity building training program on Forest Rights Act. Basically, this is done to refresh as a kind of refresher kind of a thing for our key stakeholders and frontline workers, in the field for implementation of FRA. And these 2 days, 3 hours on each day, will basically be devoted for a number of doubts which are there in the mind of our WOs, DWOs, ADWOs, BA, ITDs, special officers, micro projects, and the FR cell coordinators. We are doing it for them. Punam, please come. We are doing it for them, madam. And I welcome to one and all. I welcome Principal Secretary, madam, who has very kindly agreed to speak few words to you. And Director ST, who looks after the forest rights implementation, is also with him. Madam, there's 2 days basically will be devoted to a couple of things. We will first release an audio visual on Forest Rights Act for about 20 minutes. And on the first day, Forest Rights Act, salient features of Act and rules, typology of rights will be devoted, where any kind of question our functionaries would like to ask, will try to give. And institutional mechanism, what is the role and function that is mandated for these institutions also will be spoken. And rejection of claims, grievances and appeal, correction of record of rights, conversion of forest village, how it is to be done. So all these things and how convergence of various kinds of schemes and programs are to be done to see how the post-right activities are taking place will be spoken. So these are, in brief, madam, and this, I believe, will give a grounding to everybody, and everybody can be on the same page. One important thing I would like to, madam, inform you here. I just came to know that in Keonjhar, amongst the Juang, the PVTG habitat right has been approved today by the SDLC. So this is something, madam, we should give a big hand to the Keonjhar team for Keonjhar team for having done it. So now there is only one step, where probably we have to click in order to get the first habitat right of the country, for which Sub-Collector Mr. Ramchandra Kisku, Deputy Collector Gauri Naik, and ADW Surya Narayan Tripathi deserves a big clap, madam. I would like to clap for them. So I hope this 2-day refresher course will go a long way in addressing many questions which arise in the minds of our field functionaries, and it will help a lot in taking forward the forest rights implementation. With these words, I request Principal Secretary, madam, to kindly speak to our esteemed participants. Thank you very much, Dr. Utta. Director SC RTI, Director ST, officers of SC RTI, district welfare officers, PA ITDAs, special officers of micro projects, and all the other officers who have joined us from the district and the sub-district levels. First of all, I would like to congratulate SC RTI for having thought of this workshop. It is a very timely workshop because the department is at this point of time planning many new interventions with regard to Forest Rights Act. And as Dr. Utta said in his inaugural comments, that it is important for all of us to be on the same page. Now, when we say that we have to be on the same page, it has got some implications. The first and foremost implication is that majority of you are government servants and probably have come recently or transferred recently from a different office and have no institutional memory or experience of having worked in the tribal welfare department. Hence, it's important that you get a first-hand information as to what is Forest Rights Act all about,
and then what are the provisions, and what is the mandate and vision of the department. The second important perspective in this regard is that when we talk of Forest Rights Act, the Forest Rights Act itself is a very small act, but the interpretation is numerous. Even the guidelines and different office memorandums, OMs that have been issued in this regard, both by the central ministries and by the state government, are many. When you have to interpret the provisions of the Act, you have to interpret the provisions of the Act in tandem with the operational guidelines, office memorandums, the rules, and all other executive instructions which have been passed from time to time. So to get a comprehensive picture, it is important that we also have a thorough understanding of the Act and the related provisions. The third important thing is that in the Forest Rights Act sphere, a lot of changes and reformatory steps have been initiated in our state and also in the rest of the country. Many of these reformatory measures pertain to digital interventions, leveraging of technology. Many of them are involvement of community and level organizations and other civil society organizations. So it is also very critical that we understand that what are the newer forms of addressing this issue of Forest Rights Act. The bottom line in this case is that unless and until a tribal household has a firm ownership over the land on which he is inhabiting, a firm ownership over the rights and entitlement of the forest that he is dependent on, and a firm entitlement over all kinds of livelihood measures that are directly or indirectly dependent on the forest, we will not be able to do justice to this household, to the tribal community, and any other social and economic development that we undertake will be meaningless in the absence of this particular right. Now, very soon, it is a work in progress. The government is going to come with a scheme for saturation of Forest Rights Act. When we talk of saturation of Forest Rights Act, while we have been talking of IFR, we have been talking of community rights, community forest rights, it is important that now we should bring a closure to this chapter, and we should be able to declare that all the forest dwellers in the state of Orissa have their entitled rights, and that all the things, all the constitutional mandates that we were to achieve through this have been fulfilled. So towards that, I will feel that this workshop is the first step, and it is very timely. And I am hoping that from this workshop, all of you will take certain important learnings and then build on these learnings to make sure that we are able to deliver justice to our target audience. I would also like to add my own words of congratulations to the Juang Development Agency officials, to the sub-collector, and all other officers who have been able to be the pioneers in the granting of the habitat rights. So it is a very happy and a heartening news that SDLC has passed the habitat rights for the Juangs. And I am sure that the SC/ST RTI, because it is working towards the habitat right, as probably we would be the only state in the country who have actually done so much of work in this regard. So I am sure this is path-breaking work, and very soon we would be creating history, and we would very soon be able to guarantee the habitat rights to all our primitive tribal groups. With this, I once again thank Dr. Ota and his team for having organized this workshop. I congratulate him and his team, and I would convey my best wishes to all the participants, and I would hope that all of us together are able to deliver justice to our target communities, that is the tribal and the primitive tribal groups. Thank you very much. Thank you, madam. On behalf of SC/ST RTI and on behalf of Director ST and on behalf of all the participants, we extend our gratitude to you. I know you have a meeting, but as you know, we have done we have prepared a 20-minute audio-visual on Forest Rights Act, which speaks in details what are the types of rights and how is the process of determination and vesting of different rights to be done. This may please be
what this may please be launched by you, madam. Yes, please, we can start. We can consider it launched. Yes, madam. ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ବନବାସୀଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ସ୍ୱୀକୃତି ଆଇନ 2006ର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ? ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ 2006ର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ବନବାସୀମାନଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ଅଧିକାରକୁ ଆଇନଗତ ମାନ୍ୟତା ଦେବା। ଅତୀତରେ ଦେଶର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଆଦିମ ଜନଜାତିଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ବାସସ୍ଥଳୀ ଆବାସସ୍ଥଳୀ ଉପରେ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଜଙ୍ଗଲ ଜୈବ ବିବିଧତା ଓ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀର ସୁରକ୍ଷା କରିବା। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତ୍ତିକ ଜୀବନ ଜୀବିକାର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଧିକାର। ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ 2006 କି ପ୍ରକାର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି? ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ 2006 ଅଧୀନରେ 3
ଏହି ଅଧିକାରପତ୍ର ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ହୁଡ଼ା, କୂପ, ଶ୍ମଶାନ, ପୂଜା ପାର୍ବଣ ସ୍ଥଳୀ, ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ବୟାନ। ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଅଧିକାର ଦାବି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଅଧିକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାମସଭା ଆହ୍ୱାନ କରାଯିବ। ଗ୍ରାମସଭାରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରାଯାଇ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଦାବି ନିରୂପଣ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ବଳର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନିମନ୍ତେ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ବଳର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇ ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଯଦି ଗ୍ରାମର ଗୋଷ୍ଠୀ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ବଳ ଉପରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗ୍ରାମର ପାରମ୍ପରିକ ବ୍ୟବହାର ରହିଥାଏ, ତେବେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଯୁଗ୍ମ ବୈଠକ ନିମନ୍ତେ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖରେ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକର ଯୁଗ୍ମ ବୈଠକ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ଆହ୍ୱାନ କରାଯିବ ଏବଂ ଉକ୍ତ ସଭାର ବିବରଣୀର ଏକ ନକଲ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯିବ। ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଅଧିକାର ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ବଳର ଦାବିପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ନିମନ୍ତେ ଯାଞ୍ଚ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାବିପତ୍ର ଓ ନକ୍ସା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ଯାଞ୍ଚ ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ଏବଂ ଉକ୍ତ ବିବରଣୀରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପଦବୀର ନାମ ଏବଂ ଯଦି କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଥାଏ ତେବେ ତାହା ଲେଖାଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ କରାଯାଇଥିବ। ଯାଞ୍ଚ ବିବରଣୀ ଉପରେ ମତାମତ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଗ୍ରାମସଭା ନିମନ୍ତେ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖରେ ଗ୍ରାମସଭା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର କମିଟି ଗ୍ରାମସଭାରେ ଦାବିପତ୍ର, ନକ୍ସା ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଗ୍ରାମରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରାଯାଇ ଦାବିପତ୍ରକୁ ଗ୍ରାମସଭା ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦନ କରାଯିବ। ଗ୍ରାମସଭାର ଅନୁମୋଦନ ଦାବିପତ୍ରକୁ ଏହାର ସମସ୍ତ ସଂକଳ୍ପନାମା ସହିତ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ କମିଟିକୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯିବ। ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଦାବିପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କମିଟିକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବ। ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ଗ୍ରାମସଭାକୁ ଶିରୋନାମା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଅଧିକାର ପାଇବା ପାଇଁ ଫର୍ମ ଖ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ବଳର ସୁରକ୍ଷା, ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ଫର୍ମ ଗ ଦାବି କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମରେ ଜଙ୍ଗଲ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗାଁର ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବ୍ୟବହାରିକ ଅଧିକାର ନିମନ୍ତେ ଫର୍ମ ଖରେ ଦାବି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମରେ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ଉକ୍ତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହିତ ସୁରକ୍ଷା, ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଫର୍ମ ଖ ଏବଂ ଫର୍ମ ଗ ଉଭୟ ଦାବି କରିବେ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ବରଂ ତାର ପାରମ୍ପରିକ ସୀମା ଆଧାରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଦାବି ଫର୍ମ ଖ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ବଳ ଅଧିକାର ଦାବି ଫର୍ମ ଗ କିପରି ପୂରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ତା ସପକ୍ଷରେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଲଗାଯାଇପାରିବ। ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ବଳ ସପକ୍ଷରେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ନିସ୍ତାର ପତ୍ର, ଗ୍ରାମର ଭୋଟର ତାଲିକା, ପାରମ୍ପରିକ ଗୋଚର ଜମି, ମୂଳ ଓ କନ୍ଦା ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଜମି, ଗୋଖାଦ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟଯୋଗ୍ୟ ବନ୍ୟଫଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲଘୁ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ମାଛଧରା ସ୍ଥାନ, ଜଳସେଚନ ପ୍ରଣାଳୀ, ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ନିମନ୍ତେ ଜଳର ଉତ୍ସ ଓ ବୈଦ୍ୟମାନଙ୍କର ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ସଂଗ୍ରହସ୍ଥଳୀ ଇତ୍ୟାଦି ଦର୍ଶାଇ ଗ୍ରାମର ସମ୍ବଳ ମାନଚିତ୍ର, ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର ଅବା ପୁରାତନ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ, ପବିତ୍ର ବୃକ୍ଷ ସମୂହ, ତୋଟା, ପୁଷ୍କରିଣୀ, ଶ୍ମଶାନ ଇତ୍ୟାଦି। ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ ଅଧୀନରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କମିଟି ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗ୍ରାମ ସ୍ତରରେ ଗ୍ରାମସଭା ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର କମିଟି, ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରରେ ଉପଖଣ୍ଡୀୟ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର କମିଟି, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର କମିଟି, ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ଉପରୋକ୍ତ କମିଟିଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ତଦାରଖ ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ତଦାରଖ କମିଟି ରହିଛି। ଗ୍ରାମସଭା ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର କମିଟିର ଗଠନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ। ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ସାବାଳକ ଏବଂ ସାବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗ୍ରାମସଭା ଗଠିତ। ଏଠାରେ ପଲ୍ଲୀସଭାକୁ ଗ୍ରାମସଭାର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରାମସଭାର କୋରମ୍ ମୋଟ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟାର 50% ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସେଥିରେ 1/3 ମହିଳା ରହିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଅଧିକାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମୟରେ ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ଅତି କମ୍ରେ 50% ଦାବିଦାର କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଗ୍ରାମସଭାର କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରାମସଭାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 10ରୁ 15 ଜଣ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର କମିଟି ଗଠିତ କରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଅତି କମ୍ରେ 1/3 ମହିଳା ଏବଂ 2/3 ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ରହିଥିବେ। ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର କମିଟିକୁ ଗ୍ରାମସଭା ତରଫରୁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଦାବି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ ସମ୍ପର୍କରେ ଗ୍ରାମସଭାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା। ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଆସିଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଅନୁମୋଦନ କରିବା। କନ୍ଦଳ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାଧାନ କରିବା। ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି କରିବା। ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବିଚାର କରିବା ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା। ଧାରା 3(2)ରେ ଥିବା ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା। ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାରଭୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ଅଣଜଙ୍ଗଲ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା। ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର କମିଟିକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା। ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ, ଜୈବ ବିବିଧତା, ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନ ଓ କୌଶଳ, ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା କରିବା। ଜଙ୍ଗଲ, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ, ଜୈବ ବିବିଧତାର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସୁପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା କମିଟି ଗଠନ କରିବା। ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା କମିଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନାକୁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ଅନୁମୋଦନ କରିବା। ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପରିଚାଳନା କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତଦାରଖ କରିବା। ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ପରିବହନ ନିମନ୍ତେ ଟିଟି ପରମିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଜଙ୍ଗଲ, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ, ଜୈବ ବିବିଧତାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ସରକାରୀ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ଯୋଜନାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଧାରକ ଯେପରି ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର କମିଟି ଗଠନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ନୋଟିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମସଭା ଡକାଯିବ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଥମ ବୈଠକରେ ଏହାର ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ। ପଲ୍ଲୀସଭାକୁ ଗ୍ରାମସଭାର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମସଭାଗୁଡ଼ିକ ପଞ୍ଚାୟତର ବିନା ନୋଟିସ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବ। ଉପଖଣ୍ଡସ୍ତରୀୟ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର କମିଟିର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ। ଉପଖଣ୍ଡସ୍ତରୀୟ କମିଟି 6 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ, ଯେଉଁଥିରେ 3 ଜଣ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ 3 ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ରହିଛନ୍ତି। ଉପଖଣ୍ଡସ୍ତରୀୟ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିରେ ଉପଖଣ୍ଡ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାରୀ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଉପଖଣ୍ଡ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାରୀ ସମ୍ପାଦକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ଜନପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା 3 ଜଣ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଜନପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା 3 ଜଣ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅତି କମ୍ରେ 2 ଜଣ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିର ହୋଇଥିବେ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥିବେ। ଯେଉଁଠାରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିର ସଭ୍ୟା ନଥିବେ ସେଠାରେ 2 ଜଣ ସଭ୍ୟା ମୂଳତଃ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ବନବାସୀ ହୋଇଥିବେ ଏବଂ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମହିଳା ସଭ୍ୟା ହୋଇଥିବେ। ଉପଖଣ୍ଡସ୍ତରୀୟ କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଇନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଏବଂ ସହଜରେ ଦାବିପତ୍ରକୁ ଦାବିଦାରମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଗ୍ରାମସଭାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନଥିପତ୍ର ଯେପରିକି ମ୍ୟାପ୍, ଭୋଟର ତାଲିକା, ଖାତାପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଯୋଗାଇ ଦେବା। କନ୍ଦଳ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମାଧାନ କରିବା। ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି କରିବା। ଆନ୍ତଃ ଉପଖଣ୍ଡୀୟ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଉପଖଣ୍ଡସ୍ତରୀୟ କମିଟି ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଗ୍ରାମସଭା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଦାବିପତ୍ରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଓ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କମିଟିକୁ ଦାବିପତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ କମିଟିର ମତାମତକୁ ପଠାଇବା। ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାବିପତ୍ରକୁ ନାକଚ ନ କରି ପୁନଃ ଗ୍ରାମସଭାକୁ ପଠାଇବା। ଗ୍ରାମସଭା ଦ୍ୱାରା ନାକଚ ଦାବିର ଶୁଣାଣି କରିବା। ଯଦି କମିଟି କୌଣସି ଦାବିକୁ ନାକଚ କରେ ତାହେଲେ ନାକଚର କାରଣ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଦାବିଦାର ଏବଂ ଗ୍ରାମସଭାକୁ ଜଣାଇବା। ଯଦି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କମିଟି କୌଣସି ଦାବିପତ୍ରକୁ ଉପଖଣ୍ଡସ୍ତରୀୟ କମିଟିକୁ ପ୍ରେରଣ କରେ ତାହାର ପୁନଃ ବିଚାର କରିବା। ଆବଶ୍ୟକୀୟ କୋରମ୍ ସହିତ ଅବାଧ, ମୁକ୍ତ ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ଢଙ୍ଗରେ ଗ୍ରାମସଭା ବୈଠକଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର କମିଟିର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ। ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କମିଟି 6 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ, ଯେଉଁଥିରେ 3 ଜଣ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ 3 ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ରହିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିରେ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ବନ ଉପସଂରକ୍ଷକ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ସମ୍ପାଦକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ଜନପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା
3 जन जिला परिषदर सभ्य सभ्य अटंती जो मान मध्यरु अति कम रे 2 जन अनुसूचित जनजातिर होइथिबे और जंगल उपरे स्वाभाविक भाव में निर्भरशील होइथिबे। जोठारे अनुसूचित जनजातिर सभ्य सभ्या नथिबे सेठारे 2 जन सभ्य सभ्या मूलतः अन्यान्य पारंपरिक वनवासी होइथिबे एवं तन्मध्यरु जणे महिला सभ्या होइथिबे। जिला स्तरीय कमिटीर कार्य ग्रामसभा को आवश्यक नथिपत्र यथा मैप भोटर तालिका खातापत्र इत्यादि और सूचना अबाधरे किपरि मिल पारिबो ताहाको सुनिश्चित करिबा, आईनर उद्देश्य को दृष्टि रखी स्वतंत्र भाव आदिम जनजाति जाजाबर अबा पशुपालक श्रेणी संप्रदायर दाबीगुड़िक परखिबा, उपखंड स्तरीय कमिटी द्वारा अनुमोदित दाबीपत्र को विचार करिबा एवं ताहा संपर्क में निष्पत्ति नेबा, उपखंड स्तरीय कमिटी द्वारा नाकोच होइथिबा दाबीर शुणाणी करिबा, आंतजिल्ला कमिटी मध्य समन्वय रक्षा करी कार्य करिबा, स्वीकृतिप्राप्त जंगल अधिकार को सरकारी नथिभुक्त करिबा और खतियानर एक नकल ग्रामसभा और दाबीदार को प्रदान करिबा, कमिटी द्वारा जदि कौनसी जंगल अधिकार दाबी को नाकच करा जाए ताहले नाकचर कारण को नथिभुक्त करिबा और लिखित भाव में ग्रामसभा को जनइबा, जंगल अधिकार संबंधी द्वंद्व आपत्ति अबा अभियोगर शुणाणी करिबा और तत्संपर्कित निष्पत्ति नेबा। जंगल अधिकार संपर्क में जिला स्तरीय कमिटीर निष्पत्ति चूड़ांत अटे। धारा 3(2) रे थिबा विकासमूलक कार्य निमंते जंगल जमीर व्यवहार संपर्कित निष्पत्ति नेबा, समस्त ग्रामसभा को गोष्ठी जंगल अधिकार को निश्चित करिबा, आदिम जनजाति आवास स्थली अधिकार प्रक्रिया को प्रारंभ करिबा और अधिकार को सुनिश्चित करिबा, 13 डिसेम्बर 2005 पूर्वरु विकासमूलक कार्य निमंते बास हरैथिबा लोकंकर अधिकार को निश्चित करिबा। ग्राम पंचायतर भूमिका जंगल अधिकार कमिटी गठन पर नोटिस करिबा, ग्राम पंचायतर संपादक जंगल अधिकार कमिटीर पदप्रयुक्त संपादक अटंती। जंगल अधिकार आईन अधीन थिबा समस्त नथिपत्रर एककिता नकल पंचायत कार्यालय रहिबो। ग्रामसभा द्वारा अनुमोदित जंगल अधिकारर समस्त नथिपत्र उपखंड स्तरीय कमिटी को पठेबा, सरकारी योजना रे लोकों को शामिल करिबा। थैंक यू सो मच। आपण मन समस्त देखि थिबे जो एविटा देखा हला 20 मिनिट एटा को हमें मध्य अपलोड कर देइछु, आपण माने देखि परिबे एवं या द्वारा गोटे लोक जे कि आदो फॉरेस्ट राइट विषय किछि न जानथिबो से ए 20 मिनिट भितरे एप्रिशिएट करि परिबो कोन कोन यू नो कि प्रकार आपण को फॉरेस्ट राइट्स अछि, केमिति फाइलिंग करा जिवो, को जगह बटलनेक अछि, लुकिंग बियॉन्ड यू नो the forest right title kon kara jibo, record of right kemti correction kara jibo, everything has been very you know elaborately described। ei jo taku apan dekhile यार विषय रे आपण मानकर जहा किछि प्रॉब्लम थिबो आमे जोटा आपण मानकु देइछु आम प्रोग्राम रे को सेशन रे कोन डिस्कशन करबा, आपण को जहा किछि प्रश्न थिबो हमर रिसोर्स पर्सन्स माने बहुत एप्ट, they will definitely respond to you। But before we go to the technical session, I'll request you know our director ST Madam Poonam Guha to speak to you you know about the FRA and whatever thoughts she has before you। Right. Thank you sir। आपनो समस्तंको नमस्कार जणाउछि कि उपस्थित डायरेक्टर SC ST RTI राम भवन रे उपस्थित एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वसुंधरा बाईगिरी रो हमरो जॉइंट डायरेक्टर एंड ऑल अदर ऑफिसर्स एंड रिसोर्स पर्सन्स ऑन फॉरेस्ट राइट्स एंड मु भाबु छी जेहेतु आमे डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर्स PITDS एंड स्पेशल ऑफिसर्स को मधो आज रो ए वर्कशॉप रे इनवाइट करिथिलु including the FRA teams, so mu bhabuchi most of them would have joined। 336 you can say 335 336 people have joined। Oh ha 335 have joined already। mu asha karuchi apno mane samaste achanti including the teams led by the PITDA and the DW
आमे जेमिति जानू छु दैट FRA जे अछि FRA हमो डिपार्टमेंट रो बहुत इम्पोर्टेंट स्कीम अटे एंड हमो डिपार्टमेंट हला नोडल डिपार्टमेंट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट तो सेथि पई एटा बहुत इम्पोर्टेंट स्कीम हे जाउछि आम समस्त पई एंड एई दिशा रे आपण माने जानू थिबे दैट जस्ट अबाउट 1 मंथ इवन 1 मंथ भी हेन थिबो आमे गोटे नेशनल कंसल्टेटिव वर्कशॉप करा हितिला एई स्थान रे एंड सेटा पई मध्य इट वाज अ 2 days नेशनल कंसल्टेशन जेठी की फ्रॉम अक्रॉस स्टेट्स एक्सपर्ट्स आसीथिले एवं अदर रिसोर्स पर्सन्स आसीथिले तांकर स्टेट रे FRA ऊपर कोन कोन मंतव्य राखिछंती एवं इवन आउटसाइड स्टेट भी आउटसाइड द कंट्री मध्य किछि रिसोर्स पर्सन्स को एक्चुअली आमे एठी पाइथिले सो सेही दिशा रे जदि आमे देखिबा ताहले निहायती भाबरे मो SC ST RTI को बहुत बहुत साधुवाद जनाइबी कि से माने कंटिन्यूअसली FRA ऊपर कंटिन्यूअस सेशंस राखुछंती ऑन FRA जेटा पई আজি आमे जदि देखिबा आमे कंट्री रे गोटे बहुत भलो माने नाम राखी परिछु फॉर वेरियस FRA aspects is especially for individual rights and एबे आपण माने जेमिति प्रिंसिपल सेक्रेटरी मैम को सुनिले आमे हैबिटेट राइट्स रे भी केउंझर जोंग डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा आमे हैबिटेट राइट्स रे भी कंट्री रे नंबर 1 पोजीशन हेबाकू जाउछु एंड एटा रे जदि आपण मते पोछरिबे SC ST RTI एवं स्पेशली डॉक्टर ओता जे कि हमर डॉयन अछंती फॉर मेनी मेनी इयर्स नाउ तांकर एटाते प्रबल बहुत बड़ो सपोर्ट रहउछि आमे जानू छु दैट कैपेसिटी बिल्डिंग जे अछि कैपेसिटी बिल्डिंग इज ए कंटीन्यूअस प्रोसेस एवं सेथि पई कंटीन्यूअसली लाइक एटलीस्ट 3 मंथ्स रे थोरे एमिति कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप हेबार कथा स्पेशली ऑन अ टेक्निकल इशू लाइक फॉरेस्ट राइट्स आमे जेबे एठी डिस्कशन करि दिउछु तो इट बिकम्स इट्स ओके इट्स ओनली अ theoretical discussion जेबे आमे डिस्कशन करूछु कि व्हाट इज IFR व्हाट इज CFR व्हाट इज CR इवन कम्युनिटी राइट एंड कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स से भी जदि आमे टिके और डिटेल जीवा तो बोधा इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि गोटे पॉइंटर पर आसीबर पर कोन करिवर अछि तो सेथि पई इनफैक्ट इवन अमर गहनरे भी लाइक इन आवर मिडस्ट आमे थोरे बसिथिलु तो वी वर आल्सो वेरी मच कंफ्यूज कि माने कम्युनिटी राइट्स कोन एंड कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स कोन तो सेथि पई ए कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप वाज रियली वेरी इंपोर्टेंट एंड सेथि पई मु सर को बहुत बहुत धन्यवाद जनाउछि एंड हियर वी आर आल्सो हैविंग जॉइंट डायरेक्टर एंड द एंटायर टीम थैंक यू आमे इंडिविजुअल राइट्स रे बहुत भलो काम करिछु एज सो फार जदि आमे देखिबा 4.5 लाख टाइटल्स दिया हेछि बट आमे खाली नंबर रे ऊपर फोकस ना करी कि आमे माने सेटर माने जे तथ्य अछि तथ्य ऊपर टिके फोकस करिवार कथा एंड IFR जे अछि इट्स नॉट जस्ट सम टाइटल इट हैज टू एक्चुअली बी यूजफुल टू दैट फैमिली एंड सेटा को यूजफुल करिवा पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपन को माने रिकॉर्ड करेक्शन करिवाटा बहुत जरूरी अछि एंड रिकॉर्ड करेक्शन एर परे परे तार परे आपन सेटा को विभिन्न अन्य स्कीमर संगे कन्वर्जेंस करिवे तो रिकॉर्ड करेक्शन जेबे आमे करूछु तो निहायती भाबरे आपन माने देखंतु रेवेन्यू डिपार्टमेंट रो बहुत बड़ो भूमिका रही जाउछि एंड सेकेंडली जदि आमे सेमिति हमें देखिबा सेमिति जदि हमें देखिबा तो रिकॉर्ड करेक्शन परे परे जे अछि CR एंड CFR नेक्स्ट हैला CR एंड CFR तो ऑल दिस रे रेवेन्यू डिपार्टमेंट रो बहुत बड़ो भूमिका रही जाउछि तो सेथि पई आपन माने निहायती भाबरे आजि रो जे कंसल्टेटिव कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप अछि आपन माने जानिबर कथा कि आपन कोन रेवेन्यू ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट रो आपन को कोठी कोठी व्हाट इज द काइंड ऑफ सिनर्जी जेटा आपनर दरकार अछि सेकेंडली एक्चुअली आई वाज टॉकिंग समथिंग आई हैव जस्ट लॉस्ट द ट्रैक so so individual forest rights रे IFR title secondly hela apno record of right third hela women headed household like this is a very important thing Giri babu apno to bhalo bhavre janu chanti that when we see in the field ame jodi women headed household ku jodi ame jethi women single women achanti destitute achanti jodi sethi apno women headed household ko debe nahi and jodi apno spouse in name of both the spouses jodi debe nahi so it becomes very difficult and you are not there na if suppose something happens to that family to the head of the family suppose something happens and you have only recorded it in the name of the male person
जदि किछि हे जाउछि यू आर नॉट गोइंग बैक अगेन टू अगेन चिन्हट तो आपन करू नांती कि सेटा को जाई कि आपन पुनी थरे तार वाइफर नामे देउ नांती सेथि पई आपन जॉइंट नेम रे देबाटा बहुत जरूरी अछि तारपरे आपनर जे सीआर एंड सीएफआर आज हमें देखिले कोन कोन फॉर्म अछि से फॉर्म आपन निहायती देखिबटा बहुत बहुत जरूरी अछि एंड प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज यूसुफ FRA right and what is the community forest resource right because in the next 3-4 months we are also going to work very closely to achieve our targets in the community rights as well as the community forest resources right, especially according to the atlas that was released last year by SC/ST/RTI and it was released by Honorable CM. Apart from that, habitat rights, as we just mentioned, it's very important. And habitat rights, I'm very happy that Keonjhar has done some work, but what happens is जेहेतु कि आपण माने समस्ते एठी अछंती आशा करूची that the DWs and the PITDs are also there, ground staff भी अछंती सेति पे बहुत जरूरी आपण माने जानिबार कथा कि हमरो एई FRA रे forest department रो बहुत critical role अछि and forest department does not mean only here the department of forest, it means the DFO, it means your forest ranger because what happens is आपनो ये habitat rights रे भी जदि आपनो तांको convince करि परले नै so it will unnecessarily come to your table and you will not be able to achieve it. Therefore आज जे sensitization workshop अछि सेटा जदि हमें और गोटे दिन if we can with the help of the forest department we can also invite some of the forest people also, let them also understand the nuances of the forest rights act. तो सेथि पई habitat right हो कि individual right हो DFO एवं तांकर team should know about the forest rights and their importance and see to it that it does not linger on the table of any DFO for unreasonably long time. Yeah, without reason. Without reason. Eta ame देखिछु बहुत थर in, I will not name the districts. Eta in fact even DC सरंकर ये chairmanship रे भी हेइथिला गोटे meeting. सेठी ame देखिलु that this kind of situation has arisen जेठी माने DFO पखरे माने last 1 year हे जाइछि everything is completed, DLC re approval हे जाइछि but DFO has not signed and therefore you have not been able to issue the title just to put the signature. So these kind of situations should not be there and setup hai apno mane nihayati bhabre DFO ko nijer fold re never kotha. So at a later stage we should not get stuck up because of any particular reason. Apart from that, conversion of forest village to revenue village eta to dekhan to board of revenue ro gote swatantra bahut important role rahuchi to sethi pai apno mane aji je training nebe seta te mu eta bi request karibi ki board of revenue ro kon mane apno mananko kemiti seta process karibar achi file process karibar achi ei sabu apno mane nihayati tike देखिबे because this is a very important point. I am very happy कि हमरो प्राय 14 number of forest villages have been converted to revenue villages. Again it is a very good position as far as the country is concerned, but we should not be rest assured with that where we have given 4.5 lakh titles. Let us try to increase the number of revenue villages to revenue villages and that should also be our mandate. कन्वर्जेंस जेमिति मु कहली हम एक्चुअली आधार बेस्ड कन्वर्जेंस जदि करि परिबा तो बहुत भलो हबो सेटा पई आपनो मानको को हमें एक्चुअली ए जे फॉरेस्ट सेल को हमरो फॉरेस्ट राइट सेल को कन्स्टिट्यूट करा हेतिला कि आपनो माने गोटे कन्वर्जेंट पॉइंट करि परिबे कन्वर्जेंस एर भितरे आपनर पंचायती राज डिपार्टमेंट रो बहुत बड़ो भूमिका रही जाउछि एज फार एज रूरल हाउसिंग इज कंसर्न, एज फार एज एमजीएनआरईजी इज कंसर्न एवं हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रो भी बहुत बड़ो भूमिका रहुछि स्पेशली फॉर प्लांटेशन एंड अदर एक्टिविटीज. मिशन जीविका हम डिपार्टमेंट रो मिशन जीविका को मध्य आपनो जदि गोटे व्यक्ति को किंबा तांकर गृह को तांकर हाउस होल्ड को जदि गोटे आपनो FRA पटाटा देई परुछंती तांको जदि आपनो कन्वर्जेंस पाई आपनो तांको गोटे घर देले आपनो तांको गोटे लैंड डेवलपमेंट करिके देले आपनो तांको आंबो देले पिजुली देले तो निहायती भाबरे इट जस्ट बिकम्स द सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर देम. आई एम टू कांग्रेचुलेट द टीम्स हियर for one thing कि आमे जबे मोर सरकारे फोन करू छु एठी मोर OSD भी थिले तो मु जबे मोर सरकारे फोन करू छी FRA is one of the schemes जेठी आमे comparatively better feedback पाउ छु तो सेटा पई I am very happy and thankful and let this trend continue.
तो आपण माने कन्वर्जेंस जदि करिवे ताले निहायती भाबरे ए ट्रेंड टा कंटिन्यू करिवो आमु देखि छी लाइक इन मेनी केसेस सर दैट दे आर सेइंग कि हां हमें पट्टा पाइछु हां हमें आंबु पिजुली करिछु हमर एटा माने एटर ऊपर apart from that this mojangaljami.com, this is our portal. I think we don't have much sensitization on this portal. We have taken it as a pilot in Rayagada and Sundargarh. We need to now sensitize everybody on how to use the portal. एटा थरे करिले आमे कोन करि परिबा ना आमे लोक माननको तांकर प्राप्यटा तांकर डोर स्टेप आमे देई परिबा तो सेथि पई एई पोर्टल एर ऊपर आमे निहायती भाबरे टिके गुरुत्व देवर दरकार अछि मैडम अपार्ट फ्रॉम दैट जेमिति मैडम कहउथिले आमे एबे गोटे स्टेट प्लान रे आमे गोटे स्कीम करिबा को जाउछु जेटा कि स्टेट प्लान हबो एंड अगेन दैट विल बी परहैप्स द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री कि कोनो स्टेट रे कोनो भी स्टेट रे फॉरेस्ट राइट एक्ट को स्वतंत्र भाबरे स्टेट प्लान अंतर्गत स्कीम करा गला सैचुरेशन मोड रे जेटा कि माने 2024 सुधा हमें सैचुरेट करिबा को चाहूछु इंक्लूडिंग सीआर सीएफआर हैबिटेट राइट्स सो दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट एक्सरसाइज ग्रैंड एक्सरसाइज वी आर ऑल प्रिपेयर्ड हियर एंड आपनो माने समस्ते भी प्रिपेयर्ड अछंती एटा मु पूरा पूरी मोर विश्वास अछि एंड फाइनली माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आमे सबु जेबे कहूछु फॉरेस्ट राइट्स रे हमरो जे लास्ट टारगेट हैला सेटा हैला माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड आपनो समस्ते एटा काइंडली देखिबे की परी हमरो लोक माने तांकर जे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ए हरिडा बाहाडा हैला किबा आपनो टैमरिंड हैला महुआ हैला एई सबु निहायती भाबरे से माने प्लकिंग करिबा को आरंभ करी कि मार्केट सुधा देबारे तांको कोनो भी कष्ट न हो एटा पई ग्राम सभा स्ट्रेंथनिंग एर संगे संगे आमे निजे को भी स्ट्रेंथन आमे करिबार अछि सो दैट आमे देखिबार कथा कि से लोकटार जे प्राप्य अछि सेटा ताको आमे ठीक भाबरे देबा एटा एई दिशा रे मध्य ग्राम सभा स्ट्रेंथनिंग पई एससी एसटी आरटीआई गोटे स्वतंत्र एक्सरसाइज करिसंती जेटा गवर्नमेंट लेवल रे बे वेटिंग हबो एंड तार परे आपन समस्तंकर संगे आमे सेही एक्सरसाइज टा मध्य आमे शेयर करिवु सेटा पई मध्य अगेन आई congratulate sir and the entire team here, joint director and all the others are also here. So it's going to be a one in a lifetime opportunity for all of us. Capitalize kariba ei opportunity ko and nihaiti bhavre forest right amo department re amo state government re nihaiti bhavre the best and the most important scheme amo samasto pai habo ei vishwas rakhi ki mu rohili dhanyawad namaskar. Thank you, Director ST, Madam Poonam Guha, for your elaborate, description of forest right and how we are going and how should be the roadmap and what is the plan of Government of Odisha to saturate this Forest Right Act within a span of 2 years. I'm sure our people are doing wonderfully, at the ground level, for which we still continue to be number one in the country, though Chhattisgarh is very closely chasing us, and there's a possibility that they may overtake. But I'm sure that our people in the field are committed, and with this training program, definitely they will feel more, motivated, and will pull their socks and try to see that we continue to top, in the entire country. And the very fact which Director ST said, habitat right, we are, in all the places it is a non-starter, but in Odisha we are at the completion stage. So mo Keunchar team ko mo in particular kahibe. I think on Monday I will be calling up the collector and will tell him that within a month's time, this habitat right must be approved by DLC, and let Keunchar be the first, what should I say, district, and PVTG Juang will be the first to get this, non-starter activity in other states. ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଯିଏ ଯାହା ଯୋଉ ରିସୋର୍ସ ପର୍ସନ୍ସ ମାନେ ଯୋଉ ସେସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ upon tankara presentation sudantu kintu I'll be more happy if the unresolved questions which are there with you are posed
and you go back with some kind of a clarity. If that will happen, implementation will automatically follow. As rightly said by Director ST, even amongst us, when we deliberate, there are a couple of hiccups, couple of doubts, which we try to corroborate to each other, complement each other to come out with some kind of a resolution. So I'm sure this workshop will be helpful to you, will give you the direction, much needed direction, and resolve the unresolved issues that pricks your mind often. With these words, I think I will request Mr. Y. Giri Rao is the Executive Director of Basundhara, who has been associated with us ever since the Forest Rights Act got promulgated. And we have marched this distance in which he has a great say. Mr. Giri Rao. It was Thank you, sir, for your kind word, because this is a collective exercise. I think why Odisha is in the front runner, because Odisha has done a lot of experimentation. None of the state has done the type of experimentation in India. So that's why the Odisha is quite ahead. And here I also like to draw some attention of the director. It's not only the habitat right. If you look into the conversion of the forest village into revenue villages, though most of the states are reporting that we have done, but none of the state has done as per the law. And Odisha is the only state where the revenue department has issued an extensive guideline for how to convert forest village into the revenue village. That is the one of the thing, and the 14 or I can say 150s are in the pipeline, and that is one of the best part what I have seen. Second, interpretation of the law. And this is the tribal department, the first time in India, they came out with the FAQ. None of the tribal department has, they have that type of a courage to come out and interpret the provision of the law. Because I can say from the 2009 onwards, I have been associated with the tribal department and trying to learn from the entire tribal department. And madam, one of the thing what I also found is a teamwork. And the team has done excellent work in Odisha. And that's how, if you see the today where the Maharashtra or the Chhattisgarh and Madhya Pradesh, all Gujarat, Kerala, Karnataka, almost all the states they visited the Odisha through the SST Research Institute. Yes. They visited our number of areas where the intervention has been made and they learn. And the team from Nepal also had come recently, who had gone to the field and interacted with us for a day long. So this is what I can say. This is the uniqueness of the state government, and I'm also thankful to the madam to initiating this type of a campaign. It's a see, because I am much more what it is very close to my heart, because I have been working last 3 decades on the forest and with the forest communities, and I have seen the up and downs. When I see the department is coming with a force, so it is our responsibility, all the civil society, each individuals, all the PhD holders, all anthropologists, yes, and the academic institution like our universities, everybody has to contribute towards the achieving the states what the state wants to do. So that is how, and I think I should not say in the country, this is the only the Tribal Research Institute which is the pioneer in taking all the Forest Rights Act in the forefront. And sir, I thankful for this type of initiative taken by, and another madam, one thing I can say, when this Forest Right Bill was there, yes, Odisha is the only state in the assembly, our honorable CM put forth this matter, unanimously passed by all the, irrespective of the opposition party, everybody, and sent a memorandum to the president to immediately enact this law.
So this is what I can say ki this is that state. And almost all, if you see, if you anybody can compare the Forest Right Act bill and the original act, there is a lot of difference, because the CFR that came from the Odisha, forest village that came from the Odisha, and the displaced communities right that came from the Odisha. Because this is the what the contribution has made by the Odisha, particularly in bringing this type of a, I can say ki, a watershed legislation in the country. And we need to be always be proud, and I am also thankful to the madam, I can say, because last 15 years I have seen even the forest department, forest guard, RI, our ADW, with all type of they have a lot of challenges, but the way they have done, the pain they have taken, our WOs, ADWs and DWs, nobody can take, do that type of a work. I have seen even they don't have in the office even to keep the records, and all the provisions made by the ST department by special grant they have given, and that is the beauty of the state, I can say. I can go to the law. Thank you. That was so nice of you. And definitely, I think civil society organizations have a very big role to play, and even Dr. Ota will vouch for this Yes. and agree with me. So please continue the good work and help the department in achieving its goals. Ma'am, we are always with you, and also with the travel department of state, because we are belongs to this state. Is it? Yes. Even Telangana, you are blessing. Chalo start. So आपण समस्तଙ୍କୁ धन्यवाद। ମୁଁ କଥା କହୁଥିଲେ କି ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଟିକେ ବିଶେଷ କରିକି ସବୁ ପୁରା ସ୍ଲାଇଡ୍ ଗୁଡା ଏଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଭି ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଟା କେବେ ଦେଖାଗଲା, ଅଲମୋଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ର ଯେତେ ଜିନିଷକୁ ରହିଛି ସେ ସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ କଭର କରିଛି। ଆମେ ଏଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରିବ ସେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇକି ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର ରହିଛି। particularly ମୁଁ କେତେ ଜିନିଷ ବି ୟା ଭିତରେ ରଖିବି। ମତେ ରହୁଥିଲା କି ଇଏ ଲ ଏବେ 15 ବର୍ଷ ହବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆମର ଏଠି, ଏବଂ ଏ ଲ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି କି ଏଟାକୁ ଆମର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଯେହେତୁ ଏଟାକୁ ଆଗତ କରାଯାଇଥିଲା 13 ଡିସେମ୍ବର 2005 ରେ, ସେଥିପାଇଁ ୟାର କଟ ଅଫ୍ ଲାଇନ ଟାକୁ ରଖାଗଲା 13 ଡିସେମ୍ବର 2005। ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଭିତରେ ଚାଷ ବା ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଉପରେ ଅଧିକାର ଦିଆଯିବ। ଆଉ another thing ଏଇଠି ଲ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ रूल ऑफ बिजनेस से चेंज अणागला, कारण इनिशियली थिला कि MOEF को दिया जीवो यार नोडाल एजेंसी, किंतु से समय जतो याकु नै कि आलोचना करा गला सेतो करा गला जो मान अक्यूज डिपार्टमेंट अछंती सेमान जदी दिया जीवो लॉ इंप्लीमेंटेशन करिवा पई, तले से लॉ टा को केबे इंप्लीमेंट हेई परिबो नाही। सेति में कोहा गला मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जे कि पूरा अनबायस्ड, अपन सेमान आदिवासी को सहित पूरा बसी की काम करूचंदी, सेमान कल्चर सेमानकर सोशल वैल्यू तांका सब किछि तांकर ज्ञान रहिछि, यदि से डिपार्टमेंट को दिया जीवो बा से मिनिस्ट्री को दिया जीवो ताल जे कि लॉ टा को काम करा जाय परिबो। एंड अकॉर्डिंगली हमर पार्लियामेंट रे बिजनेस रूल्स को अमेंडमेंट करा गला, एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को एवं प्रत्येक स्टेट रूल्स ऑफ बिजनेस रूल्स ऑफ बिजनेस रे अमेंडमेंट कराई कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को करा गला यार नोडल एजेंसी, और सब स्टेट रे जो ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट अछंती सेवन को करा गला स्टेट रो नोडल एजेंसी। एंड दैट इज द मत रहउची कि जर्नीटा को आरंभ होइतिला हमरा लॉ टा को 31 डिसेंबर 2007 रे गेजेट नोटिफिकेशन है कि एतला 1 जनवरी रूल्स आसला, पुन 6 सितंबर रे रूल्स अमेंडमेंट करा आइतला। मो सेति की जिबनी कि एतरा हम बुझिया दरकार कि व्हाई इट इज इंपोर्टेंट फॉर द ओडिशा कॉन्टेक्स्ट। ओडिशा को जदि आपण देखिबे, जदि हिस्ट्री जिबे, ओडिशा तीनटा हमरो प्रोविंस भीतर थिला, गोटे लाची माड्रास प्रेसिडेंसी, गोटे लाची सेंट्रल प्रेसिडेंसी, आउट लाची बेंगल प्रेसिडेंसी, आउ किसितला राजा राजुडा को जो एक्सटेड आ स्टेट एरियास थिला। बेंगल प्रेसिडेंसी रो लॉ समथिंग डिफरेंस ला, सेंट्रल प्रोविंस रो लॉ अलगा थिला, आ माड्रास प्रेसिडेंसी रो लॉ बहुत अलगा थिला। अब प्रत्येक राजांकर मध्य निजर लॉ थिला, किंतु सब लॉ को जदी आमी जदी देखिबा सेतिरे गोटे जिंस को रखा जाइतला कि भाई ये जो जंगल टाकू रहिची, ये जंगल भितर लोक मानकू केमिति हम सेटू हटेइबा, लोकंकर जंगल भितर जो संपर्क टाकू रहउची ताकू केमिति हमें अलगा करिवा, जा फल कि हमें जंगल ऊपर निजर अधिकार टाकू
जाहिर करि परिबा एटा को आपन कॉलोनियल रिजिम रे पार्टिकुलरली याकु नै कि आसीतिला एवं परवर्ती अवस्था रे मध्ये से प्रकार हेतिला किंतु गोटे कथा रहितला कि 1957 मसिया रे सेतोल 10 दिन हमर जे डेवलपमेंट मिनिस्टर थिले डॉक्टर राधानाथ रथ तांको माने अधीन रे गोटे फॉरेस्ट इंक्वायरी कमिटी गठन करा जायतिला और से फॉरेस्ट इंक्वायरी कमिटी दायित्व थिला कि एते लॉ जो रहिछि सेंट्रल प्रोविंस रो मद्रास फॉरेस्ट लॉ तापर बेंगल लो फॉरेस्ट लॉ स्टेट रो लॉ बाकी स्टेट रो लॉ याको केमिति हम एकाठी करि परिबा हम गोटे लॉ ताकू नै कि आसी परिबा एवं सेइठू हमर आरंभ होइतला कि ओडिशा फॉरेस्ट एक्ट 1972 रे आसीतिला किंतु जो कॉलोनियल रो जो अप्रोच ताकू थिला से अप्रोच नेवर बीन चेंज rather than it consider the local communities as encroacher in their own land. And if we look into the preamble of this law is the first time I can say ki, which is trying to, because none of the law you can see a word that has been used the historical injustice. And the first time the Parliament of India जे लोकों को पाकर क्षमा मागी कौन लॉ भारत वर्ष ना जे लोकों पाखे क्षमा मागी से क्षमा ये मागला कि आमे आपण प्रति जो न्याय 1947 मसीहा दबार थिला आज पर्यंत दे पारलु नाही आमे आज आपण पाखरे न्याय दबा पई आमे ए एक्ट को नै कि आसीचु सेति पई जदि आपण देखिबे लॉ भीतर व्हाई दे गिवन द ग्राम सभा is a core function कारण हमर जत रेवेन्यू सेटलमेंट हुए इट इज द रेवेन्यू डिपार्टमेंट हु गोस हु इंडिविजुअली लोकन हाथ रे कथा वार्ता करे दे नेवर डिस्कस विथ द ग्राम सभास एटा हमर रेवेन्यू सेटलमेंट भीतर हेई कि रहितला किंतु वर्तमान पई जत हमर ओडिसा कथा आपण देखन 62 प्रकार आदिवासी अछंती ईच आदिवासी मानकर द वे दे डिफाइन द फॉरेस्ट द वे दे सी द फॉरेस्ट टोटली डिफरेंट because though we have and सबटा बड़ कथा रहला आज हम पाखरे भी फॉरेस्ट what is the forest RV definition नाइ till that we are following the supreme court under the गोदावरी केस रे जोंडा को डिफाइन करिछि आ ये लॉ रे सबटा कितरा जिंस को आपन आखे रखिया पई चाहिबे आपन पाखरे ये लॉ is not a scheme this is the law first time is trying to rectify the error committed by the colonial government that we need to keep a very आमे सेटा को बुझिया भी दरकार रहिछि सेते पय एतर तीन चारटा जिंसटा को कहले जति आपण देखि आउट एग्जांपल आपण को दोछि एतरे जो एम रे भीतर रहिछि तो डिस्प्लेस कम्युनिटी जति आपण देखिबे आज भी जो माने हीराकुद डैम रो डिस्प्लेस हेचंती जो माने रेंगाली रो डिस्प्लेस हेचंती जो माने अपर कुलाब रो डिस्प्लेस हेचंती तांको अणा गला छुट जंगल बड़ जंगल सान जंगल पत्रा जंगल रे तांको रिहैबिलिटेट करा गला 1972 रे तत्कालीन मुख्यमंत्री निष्पत्ति नेले कि जो माने जंगल जमी रे रहिचंती आमे से मानको रेगुलराइज करिवो 1972 रो ये लॉ आसला पर्यंत गुटिए भी लोक को रेगुलराइज करा जाई पारिला नाही सेति भाई ये लॉ प्रथम थर पई हमर जो माने रेंगाली रो डिस्प्लेस हेचंती जो माने हमर हीराकुद डैम रो डिस्प्लेस हेचंती सेमान जोंटी रिहैबिलिटेट कराई जो पत्रा जंगल छोट जंगल सान जंगल ले सेमान को रेगुलराइज करा जाई पारिबो ये लॉ अंडर एंड दिस लॉ आल्सो इनविसेस दैट वन सेकंड असला ये लॉ आउर उटे बड़ कथा कहूची कि हम खाली टेन्योर सिक्योरिटी देले हबो नाही ता संगे लाइवलीहुड सिक्योरिटी दबा दरकार अछि एठी आपन को मो गोटे कथा कहबी तो डायरेक्टर ताको कथाटा को रखुतिले से एमएपी ऊपर ता संगे कन्वर्जेंस प्रोग्राम ऊपर कथाटा को रखिले कारण गोटे लोक केवल जमी दे देले हबो नाही जदि आमे तार जीवन जीविकार सुरक्षा न करि परिबा तो जीवन जीविकार जदि परिवर्तन न आनी परिबा ताले किछि हेई परिबो नाही ये लॉ मध्ये सेहीटा को कहूचे आगे तुम अधिकार दियो तापर ता जीवन जीविकार सुरक्षा करो जदि ये दीटा सुरक्षा हे गला that can contribute to the ecological security आज अपन देखिए फॉरेस्ट लॉ जति की अछि there is no people this is the first law in the country which has taken the people wildlife forest together और सेति में इटे कोआ गला कि this is a triangle law जोंडा कि इकोलॉजिकल सिक्योरिटी कथा वार्ता करूची लाइवलीहुड सिक्योरिटी कथा वार्ता करूची एंड आल्सो आमर टेन्योरल सिक्योरिटी कथा वार्ता करूची दिस इज द ओनली लॉ इन द कंट्री अपार्ट फ्रॉम जेतो हम डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट किछि होतला जेहेतु 76 रे 76 पूर्व फॉरेस्ट बिकम ए स्टेट लैंड थिला 76 रे दैट बिकम ए कॉन्करेंट
लिस्ट को आसिला तापर सेंट्रल गवर्नमेंट हाथ को गला 1980 रे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आसिला फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हैज पुट some stringent provisions even diversion of the forest land that used to be very painful even जदि स्कूल घर गोटे करा जाउची जदि सेठी गोटे रास्ता टे करा जाउची it is quite difficult even to get the permission under the forest conservation act and this is the law first time is कहला कि 13टा जिंस ता भीतर देइची जो 13टा जिंस पई आपन को फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट रे कोनोसी परमिशन बा अप्रूवल आवश्यकता को नाही सेकेंडरी जदि हम फॉरेस्ट राइट एक्ट को देखु तो फॉरेस्ट राइट को देखु से तीन प्रकार राइट रही गोटे इंडिविजुअल राइट गोटे कम्युनिटी राइट आउट होची डेवलपमेंटल राइट कम्युनिटी राइट पुन चारि भाग रे विभक्त होची गोटे राइट ओवर द कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट ओवर द हैबिटेट और राइट ओवर द सीजनल लैंडस्केप particularly for the nomadic communities and ये मैडम भी इटे अछंती मैडम को एटा भी कहिबी हमर स्टेट भी बहुत नोमैडिक कम्युनिटीज अछंती किंतु ए प्रोविजन टा को आज पर्यंत मध्ये हम एक्सप्लोर करि पारि नाउ हाउ टू एक्सप्लोर द नोमैडिक कम्युनिटी जो माने अछंती से मानक पई आ कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट विलेजेस इनटू द रेवेन्यू विलेजेस दैट आल्सो कमिंग अंडर द कम्युनिटी राइट मैडम जो कथाटा कहले मु लास्ट मोमेंट रे स्लाइड टा को जोड़ीली हमर इंडिविजुअल राइट आ कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट भीतर कोन तफात रही इंडिविजुअल राइट जतल कथार्ता कहूची जदि कोनोसी क्लेमेंट जंगल जमी रे से चाष बास अबा बसवास करूथबो से जो जमी पर रहिछि सेईटा को ताकू दिया दिबो जेता हम इंडिविजुअल राइट कथावार्ता को करूछु एतर तीन प्रकार तीन चार प्रकार टाइपोलॉजी रे अछंती गोटे प्रकार लोक जो मन 13 डिसेंबर 2005 पूर्वरु जंगल जमी भीतर रहिचंती जोंडा को सेक्शन 31 ए भीतर आसुची आ गोटे को आसिला कि आपण को जो मान को पट्टा बा लीज देइचंती यदि आपण देखिबे 1980 मसिया पूर्वरु ओडिशा सरकार बहुत आदिवासी मान को जंगल जमी उपरे लीज देइथिले कि तमे सेठी रुहो तमे सेठी चाषबास करो किंतु जो लीज को पट्टा रे कन्वर्जन करिया कोले 10 वर्ष लागे 10 वर्ष परे जाके इंक्वायरी हबो whether that land which is conferred to that person whether that person is using that land or not so सेति पई बहुत समय 80 मसे तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आसिला आ से जो लीज पट्टा को आ रेगुलराइज करा जाई परला नाही ए लॉ कहूची जदि कोनसी समय रे राज्य सरकार बा राज्य सरकार रो कोनसी विभाग कहा को कोनसी लीज पट्टा देइथिबो ताले तमे ये लॉ अंडर रे से लीज पट्टा को तमे कन्वर्ट करि पारिबो आउट आसला डिस्प्यूटेड लैंड कथाटा को मध्ये लॉ भीतर रखा गला जोना इंडिविजुअल भीतर को आसुची जो डिस्प्यूटेड लैंड कहले एटा को कोन जेमिति हमर बहुत जगह अनसर्वेड एरियास रहिछि कारण एटा को अपन देखिए विगत किछि दिन रा कोरापुट रो कुटिया विलेज को नै के इश्यूज रहिछि बहुत जगह इश्यूज को नैछि बिकॉज़ दोस एरियास आर नॉट सर्वेड सेति पे कोहा गला जदी कोनोसी जमी जंगल विभाग खातर आसु नथुबो बा रेवेन्यू डिपार्टमेंट खातर आसु नथुबो दोज आर कंसीडर एज ए डिस्प्यूटेड लैंड एवं से जमी उपरे जंगल अधिकार आईन रे से मान को अधिकार दिया जाई पारिबो सेति बा आमी जते बेले इंडिविजुअल राइट रे दोचु हमको देखिया को पड़िबो कि से को नेचर ऑफ राइट आ सेटा को लोको को पई दिया जाईची जेतले एमपीआर मगा जाउची पीआईटीडी माने एमपीआर पठौचंती बा डीडब्ल्यू माने एमपीआर पठौचंती एमपीआर रो गोटे फॉर्मेट अछि को प्रोविजन अंडर केते टाइटल दिया जाईची हमर आज पर्यंत जेते टाइटल दिया जाईची सबु देखाउची सेक्शन 31 ए भीतरे किंतु सेटा को ठीक नो बहुत जगह डिस्प्लेस कम्युनिटीज मान को मध्ये टाइटल मिलिची जदि हम सेटा को सेग्रीगेट करिया को आरंभ करिवा देन वी कैन शो कि ओडिसा रे ऑलमोस्ट ऑल द प्रोविजन ऊपर इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट दिया जाईची सेकंड कम्युनिटी राइट टाउ सीएफआर राइट कोन कम्युनिटी राइट टा पार्टिकुलरली से यूज क्रॉप राइट या ऊपर कौन सी मालिकाना अधिकार दिया जाऊ नाही आपनकर व्यवहारिक अधिकार दिया जाउची आपन जे गाय चरोचंती आपन गाय चरे परिबे आपन जदि एमएपी आनुचंती आपन एमएपी आनी परिबे सेटा को आसिला आपनकर कम्युनिटी राइट भितरे सेटा को रखा जायची कि कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स रो जोंडा अलगा कम्युनिटी राइट रो जो बाउंड्री सेटा को कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट भीतर थाई पारे बा तार बाहर बंधा थाई पारे एग्जांपल फॉर गुटे गां रे तांकर बाउंस नाही तांको जंगल रे किंतु से माने कि आउ गुटे गां रे जंगल रे बाउंस नै कि आसुचंती
हुए तो सेटा तांका सीएफआर भीतर को न आसी पारे कारण सेटा आउटे गाँव सीएफआर भीतर को आसी पारे सो सेही समय जो जो लोक माने पारंपरिक भाव में जो जो जंगल जमी उपरे व्यवहार करूचंती सेही जंगल जमी भीतर को जाई परिबे एवं सेमानकर जो व्यवहारिक अधिकार अछि ताको व्यवहार करि परिबे बा ताको उपयोग करि परिबे दैट इज द कम्युनिटी राइट आ किंतु कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट है अपन जो ट्रेडिशनल बाउंड्री अछि प्रत्येक गाँव जो ट्रेडिशनल बाउंड्री रही से बाउंड्री जो ट्रेडिशनल बा कस्टमरी बाउंड्री रही ता भीतर जेतिकी जंगल आसुची दैट इज कॉल्ड एज ए कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स ताको पर्टिकुलरली मत जने जो को जदी सीएफआर टाइटल पाइला किंतु कम्युनिटी राइट टाइटल पाइनी दे कैन नॉट एक्सरसाइज द कम्युनिटी राइट इन द सीएफआर एरिया ताकि सीएफआर रो टाइटल रहला पर्टिकुलरली फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्सेस कारण एटा को जोंटा को मिलुची जे त कम्युनिटी राइट जने एक्सरसाइज करूची से त बाउंस को आणुची केते बाउंस को आनिबो तार कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स रो सेति पई ताको मैनेजमेंट प्लान तयारी करियार अछि बिना मैनेजमेंट प्लान इट इज क्वाइट डिफिकल्ट दे कैन एक्सेस द ऑल द राइट्स सेति पई जे आपण कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स डेफिनेटली फॉर ए विलेज तार ट्रेडिशनल बाउंड्री को ही कवर करिवो कम्युनिटी राइट माइट बी विद इन द सीएफआर एरिया माइट बी आउटसाइड द सीएफआर एरिया मु आपन एटू एग्जांपल देबी अमर मयूरभंज the district has issued more than the 512 titles it is one of the unique title in the country because आपण देखिबे से टाइटल रे जो जो गां लोक माने से सीएफआर एरिया भीतर निर्भर करूचंती तांको नाम मध्ये लिखा हिची कि एमाने ए सीएफआर एरिया को व्यवहार करूचंती ये गां लोक जो सीएफआर अन्य गां सीएफआर एरिया रे व्यवहार करूचंती ताको मध्ये टाइटल ले इंडिकेट करा जायछि तो अर्थात मते जदी खाली सीएफआर एरिया मिलला आउ गोटे गाँ लोक आसी मो गाँव जदि बाउंस नेला बेलू मुझे मना करि परिबिनी कारण मो टाइटल ले से लोकर मध्ये एक्सेस अछि सो मो कथा होची लॉ चाहूची एई प्रकार टाइटल टाको दबा पाई एंड ओडिसा मत रहउची कि आपन के केउंझर कथा को आसु आपन के कोरापुट कथा को आसु जोंटी जोंटी टाइटल दिया जाईची सेठी ए प्रकार यूनिक टाइटल मध्ये सेठी हमर दिया जाईची दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द या बेटर इंडिविजुअल राइट मो बेसिस जीबी नाही किंतु कम्युनिटी राइट भीतर कोन कोन रहिची गोटा कि ओनरशिप राइट एमएपी प्रथम थर पई माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैज बीन डिफाइंड अंडर द लॉ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इंक्लूड्स एक्सक्लूडिंग द टिम्बर origin बा wood जति ता भीतर रहिची तार जो प्रोडक्ट गुडा कर रहिची all are coming under the minor forest produce and this is the first time the law is giving the authority to the gram sabha you can collect you can store you can process you can sell one of the best thing is that ki the GST cannot be applicable on the MFP because the law is very clear is saying that ki no taxes royalty on the forest produce जो दे ट्रेडिंग कोचिंग कम्युनिटीज मान एटी मु रिकॉल करते तो मैडम तांका कथाटा रखुतले डायरेक्टर मैडम एमएपी परे दिस इज द अपॉर्चुनिटी व्हाट वी नीड टू ग्रैब अन्य सेट प्रोडक्ट रहउची जीएसटी लागुची वे तो पीपल कैन नॉट गेट द फेयर प्राइस बट अंडर द एमएफपी people can get but trader can give the GST but the communities cannot give the GST under the ए जो एमएफपी राइट भीतर रही आ गोटे कथा को आसला हमर बहुत जगह कोन होची आईएफआर लैंड रे भी दिया जाईची सेठी किंतु नदी अछि झरना अछि हम डाइवर्सन मध्ये टिके भी करि पारो नाउ अंडर द दिस द लॉ अंडर द कम्युनिटी राइट भीतर से माने सेठिकार जो नदी बा झरना रहिची ता भीतर जो प्रोडक्ट गुडा को रहिची आ से प्रोडक्ट ऊपर मध्ये सेमान अधिकार रहिची मैडम को आ गोटे कथा मु इट रखिया पई चाहिबी कि केउंझर इज द फर्स्ट district in the country which has given the fishing right in a sanctuary area भितरे in the 2011 जेतबे कोनसी स्टेट चिंता करि नथिला से Which district? केउंझर डिस्ट्रिक्ट फिशिंग राइट्स सेंचुरी भितरे they have given and that मत रुचि तो कोनसी स्टेट भी चिंता करि नथिला जेतबे केउंझर is the first माने district in the country which has given the fisher community ro right within the dam भितरे
सो मत होची से डैम को जदि आज जदि फिशिंग रे सिटी कोऑपरेटिव करा जाय कि जदि ताको अना जीवो ना then we can change the life and livelihood of the people. So मत होची कि this is one of the right given in the Keuzar district. Second है कि आपन seasonal resource हमर किछि nomadic communities माने रही चंती but yes ma'am, yes I can talk, I can Please take my number and give your number to me. I need his number. And I'll also like to have a copy of the presentation. yes ma'am. Thank you so much. Thank you ma'am. So I would ask हमर traditional seasonal resource right access रही जेमिति आपण देखिए हमर मांकड़िया communities अछंती बा बिरोहर community अछंती जो माने settle नुहंती ओवर द पीरियड रे हमर मयूरभंज रे केते जगह सेटल करा जायछि किंतु आज भी बहुत जगह कम्युनिटीज माने अछंती जो माने सेटल नुहंती से माने विभिन्न जगह रे टेम्परेरी सेटलमेंट करिकि से माने सेठी रुहंती सेठी जाय कि जंगलजात द्रव्य संग्रह करंती आ जांती आमे देखिछु कि मयूरभंज रो जो माने कम्युनिटी अछंती से मयूरभंज रो बाहरंती अनुगुल जांती अनुगुल देकी फुल जाय कि केंद्रापड़ा रे जो हमर नेशनल पार्क अछि सेठी पर्यंत समा जानते लार्ज एरियाज दे आर गोइंग टू कवर सो अंडर दिस लॉ से कहउछती जो नोमैडिक कम्युनिटी अछंती जो फॉरेस्ट लैंड को दे आर यूजिंग सीजनली दे हैव एक्सेस दे कैन गो दे कैन एंटर दे कैन कलेक्ट द फॉरेस्ट प्रोड्यूस तांकर जो जीवन जीविका पाई रहिछि दैट इज फॉर द आपण माने जेतो आपण जिल्ला भीतर करचंती यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर इन योर डिस्ट्रिक्ट whether there is a nomadic or semi-nomadic communities are there or not. But if you look the 2011 census, I have seen that out of the 30 districts, we have the Birohar community in the 18 districts. The Birohar community population, right, who are the totally nomadic community. I would ask like biodiversity access, traditional knowledge, या ऊपर आपण देखिए बहुत जगह रे हमर जो वैद्य माने रहिचंती से माने सेटिकार जो ज्ञान को व्यवहार करूचंती अब से ज्ञान ऊपर जो अधिकार रहिवा दरकार अछि दो देयर इज अ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट अछि इन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट केबे भी राइट देनी लोक मान को फर्स्ट टाइम दिस लॉ हैज गिवन ए एक्सक्लूसिव राइट टू द पीपल लाइक द डोंगरिया कंध से माने साल सिले करूचंती से माने जो नेचुरल कलर को यूज करूचंती दोज आर द देयर ट्रेडिशनल राइट्स but तांकर knowledge जो right टा करोची those are the this law also recognizing out असला या भीतर जो community right भीतर रहिची जो माने हमर जो पीबीटीस माने रहिचंती सेमान को मध्ये habitat right दिया कि या पर स्पेशली उटे करा जो कारण पीबीटीस ऊपर हम विशेष आलोचना करिवा नाही आउट प्री एग्रीकल्चर कम्युनिटीज हमर बहुत जगह प्री एग्रीकल्चर कम्युनिटीज अछंती आज भी अछंती जुआंग एरिया भीतर प्री एग्रीकल्चर कम्युनिटी जो माने कि मुख्यतः हमर झूम कल्टीवेशन बा फूड कल्टीवेशन जो माने प्रैक्टिस करूचंती सो हमने देखिछु बहुत जगह रे जोंडी प्री एग्रीकल्चर कम्युनिटीज माने अछंती जंगल अधिकार आईन आसीबा पूर्वरो फोर्सेबली लॉट ऑफ एरियाज प्लांटेशन हैज बीन डन जा पर कि लोक माने सेमान को राइट को हरैचंती so this law also giving a right to them if their land has been forcibly तांका पाखर निया जायछि और सेति पय कोनी से कंपनसेशन पाई नाहंती तर से प्रकार कम्युनिटी माने मध्य जंगल अधिकार आईन रे अधिकार पाई परिबे so that is one of the right that has been given under the ये आउट जोंडा को कहले सीएफआर रे this is the first time constitution la every citizen has a duty to protect the environment but never given the right citizen man को protection दवा पाई this is the first time the law is giving a right to the communities you can protect you can regenerate you can manage your own community forest resources okay so one of the right that has not been given under the forest right act though that is traditional right hunting बा कोनसी जगह रे हास बसेबा कोनसी अंडा को आनिबा बा कोनसी छाल को ये करबा कोनसी वन्य जंतु को शिकार करिया दो दैट इज देयर ट्रेडिशनल राइट और कस्टमरी राइट दैट हैज नॉट बीन गिवन अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट ताकू दिया जाई नाही दिस इज नॉट द राइट सो बाबा
हमर एटा काम करनु सो आउटले ये 13 प्रकार जिनसटा को जोंटा को करा जाई परिबो डेवलपमेंटल फैसिलिटी अपन स्कूल करि परिबे डिस्पेंसरी करि परिबे अंगनवाड़ी करि परिबे फेयर प्राइस ऑफ करि परिबे जंगल जमी रे कम्युनिटी सेंटर्स करि परिबे टैप माइनर वाटर बॉडीज अपन करि परिबे ड्रिंकिंग वाटर करि परिबे माइनर इरिगेशन कैनाल इलेक्ट्रिसिटी टेलीकम्युनिकेशन सोलर एनर्जी बा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पाई अपन जंगल जमी रे करि परिबे स्किल डेवलपमेंट सेंटर करि परिबे रोड करि परिबे वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग मध्ये करि पारि ये प्रकार जो 13टा दिया जायछि ये 13टा पई आपन को फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अंडर रे कोनोसी परमिशन ला आवश्यकता को नाही इट इज ओनली एथरे खाली गोटे ये कथा को रखा जायछि एथरे केवल केंद्र सरकार बा राज्य सरकार कर कोनोसी विभाग आ जिला परिषद ये तीन जन ही प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट हे परिबे अन्य कोनोसी लोक हे परिबे नाही आमे बहुत जगह रे देखिचु जोटी स्कूल घर पाई बा एति पाई दिया जायछि सिटी टाइटल दिया जायछि ग्राम सभा को सेगुडा को जगह रे केबे भी टाइटल दबा कथा नुह बिकॉज़ दैट इज द डेवलपमेंटल फैसिलिटी जदि एजुकेशन डिपार्टमेंट अछि स्कूल तयारी करछि then you are giving the right to the education department to run the school किंतु सेठी ग्राम सभा को कौन सी टाइटल या पर दिया जीवार आवश्यकता को नाही किन बहुत जगह देखिछु सेठी टाइटल दिया जायछि एतर की फीचर भीतर जेमति म आपन को कहितली ग्राम सभा इज द ओनली द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जे की क्लेम को संग्रह करि परिबो ताकू प्रक्रियाकरण करि परिबो ग्राम सभा को छाडी सल्ला परे कोनोसी सरकारी ऑफिसर ग्राम सभा बिहाफ रे कोनोसी क्लेम को संग्रह करि परिबे नाही सेकंड एला होची कि जो व्यक्तिगत अधिकार क्लेमेंट तार प्रोसेस टा को इनिशिएट करेबो किंतु कम्युनिटी राइट क्षेत्र रे फॉरेस्ट राइट कमिटी ऑन बिहाफ ऑफ द ग्राम सभा से क्लेम प्रोसेस टा को इनिशिएट करिवो आ एथरे आपण गोटे जिंसटा को भी मन रखिबे दिस अंडर दिस लॉ द ग्राम सभा इज ए क्वासी जुडिशियल बॉडी व्हाई आई एम सेइंग द ग्राम सभा इज ए क्वासी जुडिशियल बॉडी इफ यू रीड दिस लॉ the Gram Sabha has been authorized to hear the petitions, grievances, and resolve the conflict. ताले judicial body छोड़ा केही आपनकर grievance petition रा hearing करि परिबे नाही जो माने judicial body भीतर अछंती सेति बे प्रथम तर पई ये लॉ रे Gram Sabha is being considered as a quasi judicial body because they can hear the petition, they can resolve the conflict. सेकंड असला जति परफॉर्मा देखि आ भीतर रखाय कि मु पूरा भीतर जीबी नाही आ गोटे जिंस को आमे देखुचु जेतो ग्राम सभा रिटन करूची इंफॉर्मेशन मागुची दोज इंफॉर्मेशन हैज टू बी गिवन मत रहउची कि लास्ट ईयर रे जेतो बेले एसटी डिपार्टमेंट हैज ओपन पर्टिकुलरली इन द शेड्यूल्ड एरियाज भीतर पर ट्राइबल सब प्लान एरिया रे एफआरए सेल करा गला एफआरए सेल भीतर रखा गला कि कोन जिंस रहिबो जोटा कि ग्राम सभा पाखरे सहज रे उपलब्ध हेई पारिबो जेमति तांकर अछि क्लेम फॉर्म कथा को आसु तांकर अछि पंचायत रो जो वोटर रो लिस्ट अछि से लिस्ट कथाटा को आसु आ अछि हमर जी अन्य जो रेकॉर्ड पत्र से सब जिंस गुडा को जेमति एफआरए सेल माध्यम रे ग्राम सभा पाखरे पहुंचा जाई परिबो सेति पई मध्ये गत वर्षटा से प्रकार कार्यक्रम मध्ये आरंभ करछन हम राज्य सरकार आउट असला कि जते कौन सी ग्राम सभा इंटिमेशन करछि ऑफिशियल मान को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दे हैव टू बी देयर ड्यूरिंग द जॉइंट वेरिफिकेशन कि ना बहुत जगह देखुछु सेटा को केबे भी हेई पारु नाही लॉ रूल्स कहूची यदि प्रथम नोटिफाई करा गला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल को रेवेन्यू डिपार्टमेंट को यदि से माने न आसिले सेकंड टाइम ग्राम सभा नोटिफाई करिवो यदि सेकंड टाइम न आसिले whatever the decision taken by the Gram Sabha, that is the final and binding. Tapre forest department cannot put forth a grievance petition before the SDLC or the DLC because the opportunity has been given to the forest department, revenue department to be part in the joint verification process. How would a law with a jinso roichi amoko eviction? We cannot do the eviction till the recognition verification जे पर्यंत कंप्लीट न होई कि कौन से लोक को जंगल जमीर एविक्ट करा जाय परिबो
नाही बा सेमानकर जो अधिकार गुडी को देइची से अधिकार मध्ये आमे तांको ची कोन we cannot deny in exercising their right. ओके जदि आपण सेक्शन 4(1) को पढिबे सेत्र बहुत क्लियरली लिखा जायछि notwithstanding anything contained for the timing any other laws that is in applicable force the law hereby recognizes and vests तार अर्थ हला जो दिन ए लॉ टाकू नोटिफाई करा गला the date of the from the notification all the people are the right holders. We cannot deny their right. तापरे गोटा आउट कुछ पिटिशन कैन नॉट बी डिस्पोज जदि कौन सी लोकर क्लेम रिजेक्ट करूछु बा मॉडिफाई करूछु मॉडिफिकेशन रीजन जणेवार अछि तार पिटिशन को ग्रहण करबा दरकार अछि जदि ताको कौन सी अपॉर्चुनिटी न देकी तार क्लेम को रिजेक्ट करा जाउछि तारे दैट इज कैन बी ए कंसीडर एज ए वायोलेशन अगेंस्ट द लॉ. आ गोटे लॉ भीतर गोटे प्रोविजन रहिछि वी सब्सिक्वेंटली अमेंडमेंट सेटा को हटि आइछि जो right conferred under the law is are heritable not alienable or transferable. ये जो not alienable or transferable एटा जो provision टा को थिला that has been amended under the land acquisition act रे land acquisition and rehabilitation resettlement act रे the forest rights which have been conferred under the forest right act that can be acquired but for that one they are going to get the compensation that is under the LAR act भितर किंतु एथिरे जो कथा रे जो पट्टा उडा कर दिया जायछि that पट्टा बा ताको जमी पर जो अधिकार उडा दे सत्तो पत्र दियाछि that is a heritable. तापरे जो पट्टा दिया जो जने मैडम इटी कथा वार्ता को करूथिले कि सेटा को जॉइंटली स्पाउस को नारे सेटा को दिया जो एठी आपण गोटे भी जिंस को रखिबी कि बालेश्वर is the only district in the country I can say in the world where they have given the title 88% title they have given to the women. None of the district has done that type of work except the Baleshwar. And etre out of jinsota ko rahichi ki the diversion of the forest land that requires the Gram Sabha consent. जोंति pai भी diversion हबो ता pai Gram Sabha बिना consent रे the land cannot be diverted because the law is very clear because the law is trying to address the historical injustice happened to the communities. तब जेमते आपण कहतली MFP जेति की रहिछि people can collect can store can sell can process सेटा से करि परिबे ता पई कोन जगह रे अब आपनकर टीटी परमिट आवश्यकता नहीं ग्राम सभा द्वारा जो कमिटी टा को रहिछि बा ग्राम सभा रो ऑथराइज्ड पर्सन they can issue the TT permit but the state government has taken the decision कि जेहेतु हमरो TT transit रो गोटे रूल्स रहिछि अंडर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अंडर रे जोंटी ग्राम सभा माने चाहिबे कि ताकर प्रोडक्ट टा को बिक्री करिया पय they can write a letter to the DFO then DFO can supply them the TT permit book with a free of cost. तापरे आउटे कथा जोंडा को रहितला इते आपण रखितली एटा गल्ला केतरा मीट आपण का आगे रखिबी it is a much more important बहुत जगह देखिचु it has been सबआडे गोटे कथा कहूची one family one claim बा one title जदि गोटे फैमिली रो चारिटा क्लेम आसीची we are rejecting the 3 claims we are giving 1 claim ro ame consider korchu which is illegal under the law. Nowhere in the law it has been mentioned that ki one family can submit 1 claim. It is talking about the जो लोक माने बा क्लेमेंट जो माने जंगल जमी रे चाष करूचंती and if you look जदि आमे सेही जिंसटा को देखिचु हमर पाखा पाखी 3% जो क्लेम रिजेक्ट हेची only for the one double application ना रे 3% claim around the 3385 टा क्लेम रिजेक्ट हेची आ गुटे जिंस देखिचु minor cannot submit the claim law रे कोठी लिखाइची minor cannot submit a claim जदि ताको बापा मां मरि आइथिबे आदिवासी कल्चर रे आपण भी जानि चंती
तांको जदि बापा भी मरि जाइतो माँ आउ जन को बाहाई की पळै जाउची किंतु पिला ता अजा घरे रहउची जदि से प्रकार क्षेत्र रे ता बापा बा ता माँ जदि कोनसी जमी को चाष करतो से पिला आदिवासी पिला ता छोट बेलू जाई जंगल जमी रे चाष करूची ता जमी रो केयर नउची तो से प्रकार क्षेत्र रे why he cannot get the right? Where is the law that has mentioned that minors cannot submit the claim? Read the very clearly the section 2D of the act. Another thing we have seen that this is also myth. The forest right cannot be given in the reserve forest, DPF, UDPF, sanctuary, national park, tiger reserve. We need to read the section 2D. सेतरे जो अंतर रखा है फॉरेस्ट रे कौन तार रही ता डेफिनेशन टा we need to read. तापर गोटे आसला maximum extent is a 10 acre बा 4 hectare. This is only applicable for the section 31A पाई जो 10 एकड़ बा 4 हेक्टर किंतु जो मानो को आगुरु सरकार लीज देई चंदी पट्टा, if we are converting that lease patta into a permanent patta, this 10 acre is not applicable. If that time government has given then the 12 acres or 15 acres of land, then they are entitled to get the 15 acres of the land. सेतिबे आपण सेक्शन 4C टाको 6 टाको पढिबे जोटा को लिखा है कि that is only applicable for the section 31A, that is not applicable for any other provision that has been mentioned under the forest right. तापरे आउ गोटे जगह देखा CFR area can be allocated to the VSS. It has been repeatedly clarified by the Ministry of Environment, Ministry of Tribal Affairs and the state government कि कौन सी CFR area को VSS को दिया जाई परिबो नहीं. CFR area has to be given to the ग्राम सभा. तापरे आउ गोटे आमे देखिछु एबे ओडिसा रे हमर पाखा पाखी लखे 30,000 क्लेम reject है DLC level ले. But most of the cases what we found जो claim गुडा को reject है DLC level ले, that has not been intimated to the claimant, which is also a illegal and violation of the law. 12 rules रो 3, 7 और 10 ए तीनटा provision का आपण पढ़ी परिबे जो तर लिखा है anyone is rejecting the claim, even the DLC, though the DLC is the final authority to take the decision on the forest right act, forest rights, if they are rejecting and modifying any forest right claim, they have to intimate. And 2009 the chief secretary also given a letter to all the collectors in this regard, and I would request all the people, please refer the 2009 February 2 letter written by the chief secretary. Incomplete application can be rejected. आमे बहुत जगह देखिछु जो cause of rejection दिया जाउची सेतर भी केतरा जगह आसुची incomplete application ता reject करा आइची. You cannot read the rules 12 bearers 6. तापरे any government officer can hear the petition and the grievances. आमे देखिथु जेता बेले review of rejected claim होतला सेठी बहुत जगह तहसीलदार माने जाइकी हियरिंग करूथले कि कोटे अन्य ऑफिसर माने हियरिंग करथले. This is totally illegal. They cannot hear any claim, any petition जोटा review of rejected claim. या संपर्क रे स्टेट डिपार्टमेंट has given a very good instruction जेतबे सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आसीतला ता परे परे they have given a very good guideline. एपन आपण सेक्शन 6(2) और 4 टाको पढिबे only the SDLC and the DLC they can hear. SDLC DLC छाडला परे अन्य कोनसी ऑफिसर को ऑथराइज करा जाय नहीं कोनसी क्लेम को रिव्यू करबा पाई. तापरे आउ गोटे जिंस हम देखिछु कि जो SDLC और DLC रहिछि से तो तीन जन गवर्नमेंट ऑफिसर रहबे जेमति एठी मैडम भी रखुतले एवं आपण एमबी मटेरियल भी देखुतिले से तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जने रहइबो हमर सब कलेक्टर SDLC रे अछंती और ट्राइबल डिपार्टमेंट जने रहइबो. DLC रे मध्ये से प्रकार जने DFO रहिबे जने हमर कलेक्टर अछंती और TSP एरिया बा एरिया जोन रही शेड्यूल 5th एरिया रे PITDA
a non-scheduled area DWs are being given as a nodal officer for this amara जो DLC रे member रहा कथा जदि कौन सी जिला रे more than one DFO are there, so the conservator of the forest can be the member in the DLC, but बहुत जिला रे आमी देखा जाउची कि more than one DFO जदि कौन सी जिला रे 5टा DFO अछंती in the DLC meeting रे we are inviting them as a member of the DLC, which is against the law. We cannot do that type of thing. If there are more than one DFOs, you can refer that matter. The conservator of forest can be the member in the DLC. So, एठी मु आपण गोटे टाइटल टाको देखैछि मु से जिल्लार ना नेबि नाही एठी, किंतु सेना जो टाइटल भितरे CFR एरिया देइचंते सेतिर किंतु VSS पाई they have deducted the total CFR area VSS नारे एतिक area दिया जाइछि. This is totally illegal because you need to look. The SC/ST Atrocity Act already been amended. The forest right has been included in the SC/ST Atrocity Act. If anything infringing the right of the community or the claimant or the right holder, that can be considered as a atrocity. So when we are giving such type of a title, when we are giving the titles to the VSS, we need to also look whether it is not infringing the rights of the people or it is not going against the law. So this is the institutional mechanism. Already you all know about that thing. I am not going to say. The Gram Sabha is the main, then the sub-regional level committee, then district level committee, and the state level committee. And the sub-regional committee consists of the 6 members. It is 6 जन एबे चिट्ठी जाइतिला कि प्रत्येक गांव भितर FRC रो रिकन्स्टिट्यूशन करिया पई काम 2008 रे हम कन्स्टिट्यूशन हेतला तापर पर बहुत मेंबर माने के मरि आइचंती के गां छाडी पळि आइचंती. So there are a lot of things and the informations are not also available at the DWO level. सेति पय एथर निष्पत्ति नि आइतला प्रत्येक जगह रे आउथर रिकन्स्टिट्यूशन करिया पय FRCs मानको. So I think most of the district might have completed that one. So I am not going to the, these are the already जेतले एबी materials रखा जाइतला ग्राम सभा रो rules responsibility authority कोन अछि forest right committee रो HDLC रे these are the can be given to you. The SLMC रो कोन अछि मोटा रो कोन अछि nodal officer रो कोन अछि. So किंतु एइत्र केते जिंस आपण रखुची कि भाई आपण you have to look the section 7 because any member or any government officer or any committee members, FRC is also coming under this one. If FRC is violating any provision of the law, they can be penalized and penal action can be taken against the forest right committee also. So section 7 it's saying very clearly any authority or committee or officer or member of such authority or the committee contravenes any provision of the act or any rule, then that is going to be considered as a violation. Ebong ja birudhare seta ko accuse karai to they have to prove their innocence. So we need to keep this thing as a in a mind because the tribal department has been receiving lot of petitions, and the petitions are going to the SLMC रो आसुची पुनी डिपार्टमेंट को इंक्वायरी करिया जगह रे आमे देखिछु जोंटी लोकों को पट्टा पय अप्लाई करचंती सेठी फोर्सेबल प्लांटेशन होची. That is totally illegal because that is violating the section 4.5. आमे सेंचुरी नारे नेशनल पार्क नारे टाइगर रिजर्व नारे we are rejecting the claim. That is totally illegal. We cannot. Claim modify होची but we are not written intimation करूछु लोक मानकु बा claimant बा ग्राम सभा को. मुझे कहले 2009 रो लेटर टा is a much more important because that has gone from the chief secretary. And आउटा असला कि हमें डिमांड करूछु particular form रो evidences को
एटी आउ गोटे आपण कथा रखिबी हमर जेति की ओटीएफडी क्लेम आसीची पाखा पाखी 88% ओटीएफडी क्लेम आर रिजेक्टेड because सेत्र गुटे जिंस लेखा जाउची these people are not cultivating that land for the 3 generation 75 years आपण सेटा को देखिबा दरकार अछि the tribal department has given a lot of clarification over that one under the law it is not required the person is cultivating that land for the 75 years if that person is cultivating that land prior to the 13 December 2005 but he has to prove that they are in that village in the last 3 generation जमी उपरे 75 वर्ष धरिकी चाष कला परे सेही पाइबो टाइटल that is totally misinterpretation. I sincerely requesting to all the officers while they are rejecting the OTFD's claim they have to also look whether 75 year generation को धरिकी तार rejection करा जायछि कि and this is the process of or 2-3 slides I can complete our determination the process टा को कोन रही छि मो इतरे जीवने इतरो गुटे ता IFR कथाटा को आपन का आगे रे नै के आसी फर्स्ट this is one slide I have kept प्रथम तो आपन को FRC has to be constitute first thing second the Gram Sabha has to give authority to the FRC to receive the claim on behalf of the Gram Sabha आपन एबे जते बेले FRC रो reconstitution करूचंती and the resolution copy the template given by the Panchayat Raj department in the 2008 जदि आपनकर पुराना फाइल को खोजिबे ताल आपन से टेम्पलेट टा को पाइबे नले SC/ST रिसर्च इंस्टीट्यूट रो वेबसाइट को जदि जिबे you can also get that template जो तरह लेखा जाईची कि ग्राम सभा FRC को जे पर्यंत क्षमतापन्न करूनी FRC cannot receive any claim आउ आजि जते बेले आमे देखुछु बहुत जगह रे because law is saying that कि आपन को जो दिन टू क्लेम कॉल करा गला तार 3 मास भीतर the people has to submit the claim आजि भी क्लेम संग्रह चलीची but whether जे तामे क्लेम को संग्रह करूछु सेता बेले ग्राम सभा रे रिजोल्यूशन होची कि प्रथम रिजोल्यूशन एटा हवा दरकार अछि कोथि पई सेमान प्रथम 3 मास भीतर क्लेम संग्रह करि पाले नाही आदि काहे कि सेमान आउरी क्लेम को रिसीव करूचंती they have to mention the cause of the reason for receiving the new claims then they are under the law they can receive if the resolution doesn't contain the reason of the extension of the period for receiving of the claim if any claim received 2008 onwards all are the illegal we have to check because most of the matters are going to the Supreme Court or the State High Court and the State High Court and the Supreme Court is particular on the document we have to look कारण जो माने WS मान अछंती बा FRA सेल जो माने कोऑर्डिनेटर थी जॉइन करिसंती they have to look this all the things तापरे थरे क्लेम सबमिट हला परे सेट FRC 3-4टा रेकॉर्ड सेटी मेंटेन करिवो गोटा आसला क्लेमेंट रजिस्टर that has to be there in all the FRC second allows आपन को मीटिंग रो बा प्रोसीडिंग्स बुक that has to be there in the all the FRC आउट आसला नोटिस बुक ये तीनटा मिनिमम गोटे FRC पाखरे रहइबा दरकार अछि and unfortunately these are the records not available in the most of the I can say कि 99% FRC रो क्षेत्र रे ए records उडा का गां भीतर available नाही जोंटी पाई कि आजि जेता बेले जो क्लेम रिजेक्शन हेई छी ताको क्लेम हजी हेई छी ताको खुजिला बेल को मिलु नाही जदि ये register था then that can be tracked how it under the rule it is a mandate this register has to be maintained how एथि पई पंचायत राज डिपार्टमेंट 2008 रे क्लेमेंट रजिस्टर केमिति मेंटेन हो तार फॉर्मेट कोन रहबो पंचायत राज डिपार्टमेंट also issued that format the template is also available in the SCST
research ro website re. You can download that one. And the tapare jeta claim seটা ଆସିବ, then the FRC ତା ପୂର୍ବରୁ SDL ତାକୁ ସପ୍ଲାଏ କରିବ ଭୋଟର ମାନଙ୍କର ତାଲିକା, ସେଠିକାର ମ୍ୟାପ। ଏଥିପାଇଁ revenue department is given a letter, all the map, whether that is a revenue forest map or the forest department map, that has to be given free of cost to the gram sabha. तापरे ये सब पाइला परे, then the FRC is going to intimate to the claimant and the forest department और revenue department को यही तारीख दिन में joint verification करूछु। So joint verification समय रे ये ऑफिसर मान को उपस्थिति रे they are going to do the joint verification। यदि आपण देखिबे हमर प्राय 21% claims are rejected, the land is not a forest land। So most of the joint for kind of look pota paibu, the people are applying. But when field inquiry hochi, we have seen that that is not a forest land. So that needs to be recorded in the claimant register, and that is needs to be intimated to the claimant tar presence re. Aur jetabale a claim verification hochi, we need to ensure both the spouses has to be there during the verification of the claim। मत होची एही जिंस गुडा का बहुत समय देखु ना, we are just with the formalities we are going, but the law requires this all the things what I am saying here। तापर तो verification of claim रे बहुत समय कोन होची दीटा आपन को दबा दरकार छी evidences। we are discussing, we will also discuss the evidence, किंतु सेठी evidence लोक कोट आनी आदिवासी ता निज पटा पाउती ता घर भीतर रखुनी, and we are expecting that they can produce the evidences। so सेही समय कोन होची जे तो ता जमीटा को मपा जाउची, and ता पाखर जो लोक माने अछंती field verification समय जदि ताकर oral evidence ता को ग्रहण करा जाउची, and that is going to be recorded in the claimant register, that can serve as a evidence। if you read the evidences जोटा को रखा जायछि, evidence is a very open under the Forest Right Act, because the law is intent to address the historical injustice। if that is going through the all the evidence act anusare, then this rights cannot be conferred to the people। सेते मोता कोची even the 3 generation कथा को आसुची, if the people are unable to provide the records, ताले से समय हमको करिया दरकार छी these are the oral evidences which we are collecting। बहुत जगह कराला oral evidence हेले तुम 80 वर्ष रो बुढा को आनो, 80 वर्ष बुढा को गां भीतर मिलिबो, who is going to give a oral evidences? oral evidences 80 वर्ष बुढा बने थिपो। so सेति पे कहला genealogy that has been added in the evidences भितरे, जदि उटे गां रो genealogy से तार परिवार रो दउची, तापर आउटे भी लेटर आसीची, अपन जे एफएक्यू भी जदि पढिबे, जदि से गां रो जदि गुटिए लोकर भी एविडेंसेस मिली जाउची, that can be for that community ପାଇଁ, that can be also served। कारण हम राज्य 1936 मसिया रे हिची लॉ को 1930 मसिया रे, जे तो ओडिसा नथिला 1930 मसिया रे, then how the people can produce evidences? so we need to also look, interpret the provision of the evidences that given under the Forest Right rules before we are rejecting any claim। that thing jeta verification saruchi, then the Gram Sabha FRC has to prepare a report, verification report carry karibe। verification report carry कर साला पर तार कॉपी गोटे रेवेन्यू डिपार्टमेंट को पठेबे, तार गोटे कॉपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पठेबे, तार गोटे कॉपी गार कांथरे मारिबे, कहबे आसता आगामी दिन रे ग्राम सभा होबा पई जाउची, जदि आपनकर ए जो वेरिफिकेशन ऊपर कोन से आपत्ति अभियोग रहिची, ताल आपण ग्राम सभा रे से आपत्ति अभियोग को रखि पारिबे। किंतु ये प्रोसेस has not been followed in the most of the cases, but that is also required under the law, because this law is trying to democratize everything। it is seeking sentiment को 50% quorum नहले none of the decision can be taken। our gram panchayat act 1/10 is a quorum, but this law requires the 10% of the quorum। सेटा को हमको बुझियो दरकार अछि why this law is quite माने कोन मता कुची जो डेमोक्रेसी रो प्रिंसिपल को ऑफेंड करिछि,
while they are taking any decisions. अब आउट होता सिटी तो ग्राम सभा मीटिंग हो, ग्राम सभा has to send it to the SDLC, then SDLC has to approve, then send it to the DLC. This is the process of the both the cases. किंतु कम्युनिटी राइट क्षेत्र रे बा CFR क्षेत्र रे गोटे खाली व्यतिक्रम रही एटी क्लेमेंट निजे हला ग्राम सभा on behalf of the ग्राम सभा forest right committee has to initiate the process. अब एटी but it is also required से गाँ भीतर जो माने वयोज्येष्ठ लोक रही we have to identify the resource dependent people जो माने resource ऊपर कौन पे depend करूचंती, because that is quite important, because unless until we are identifying the user groups we cannot record the typology of rights they are exercising within the forest. अब गाँ रे जो माने वयोज्येष्ठ व्यक्ति माने रही they can tell the traditional boundary ताको गाँव भीतर कोटी जाइछि. So this तमे CR और CFR कथावार्ता करूछु, it requires the FRCS to initiate, then first alachi FRCS to identify the elders of the village जे कि गाँव रो boundary कथा को कहि परिबे traditional boundary को, then user group for the community right को यूजर ग्रुप अछंदी किए कोडी गाई चरिया पई जाउची, कारण गाँ रे समस्त गाई चरिया पई जानतिनी, किछरा पर्टिकुलर परिवार अछंदी जो माने गाई चरिया पई जानती, so they can say कि सेमा को जागा रे को ऋतु रे समय जाई कि गाई चरोचंती. So those are needs to be recorded जतबे ताकर हम एतो इले गाई टको रिकॉर्ड करूछु, बिकॉज़ ROR से हिसाब रे करेक्शन हबो. ये प्रोसेस परे परे सिमिलरली जतबे एटा को मैप तयारी करा जिवो, मैप तयारी कला समय से मान दे हैव टू आल्सो लुक कि ताकर आखा पाकर को कौनसी गाँ रो ट्रेडिशनल बाउंड्री संगरे यार कॉन्फ्लिक्ट रही छि कि बा कॉन्फ्लिक्ट को न आसीबा पई दे हैव टू कॉल द जॉइंट वेरिफिकेशन मीटिंग जो मानका ताका बाउंड्री रे जो गाँ उडाक उपस्थित अछि बा जो बाउंड्री संग ताकर बाउंड्री टा को मैच करूछि, तो से गाँ रो उपस्थिति रे दे हैव टू डू ए जॉइंट वेरिफिकेशन कला परे then they have adopted resolution, common resolution कि आप से कार FRC माने जो अन्य कार FRC माने अछंती से resolution भीतर they have to write कि we don't have any objection बा हम तांकर कोन से right अछि they have to mention so that the ग्राम सभा can also say भाई ये गाँ रे ये right जंगल भीतर रही छि, that has to be resolved, that has to be recorded. तापर से जो joint statement हबो बा proceedings हबो that has to be signed by the ग्राम सभा और आखा पाकर ग्राम सभा माने ताको साइन करी, कारण से यदि साइन कर देथिबे ताल तांकर तो जॉइंट वेरिफिकेशन होची, ताल ये गाँ को अब डाकिबा दरकार नै, बिकॉज़ ये कॉमन रिजोल्यूशन हैज बीन साइंड बाय द ऑल द पीपल. देन they will ये समरी भी they have to intimate the forest department, revenue department for the joint verification. The joint verification they have to be there and they have to help the ग्राम सभा तांकर मैपिंग करिवा क्षेत्र रे बहुत जगह हम भी देखिछु कि रिजर्व फॉरेस्ट हैज नॉट बीन गिवन अंडर द CFR और CR भीतर ताको कोआउची तमरो रिजर्व फॉरेस्ट भीतर कोन से अधिकार नाही, एंड इफ द ग्राम सभा इज मूविंग एनी पिटिशन then it is going to be considered as a violation of the law. We need to consider, because the rights are not given to destroy the forest, but the Gram Sabha authority diaichi to conserve and to manage the forest. Wildlife protection is the duty of the Gram Sabha and also authority of the Gram Sabha. They have to protect the wildlife habitat. So Mata Rochi, we have to be very open while we are looking the CR and the CFR rights. Similarly, Mata Rochi Gram Sabha pakar upasthapan habo, then the jibo SDLC has to look, then the jibo DLC को. So Mata Rochi, this is the process. या भितरे मत रहउतला कि आउ एडा मो प्रीडिटरमिनेशन प्रोसेस को जिबि नाही, कारण it will take a lot of time. एटा को अपन संगे शेयर कर दिए जो पूरा प्रोसेस टा को भीतर दिया जायछि केमिति रिजोल्यूशन हबो कोन हबो, that has been very clearly put forth. आ जोंडा अपन मटेरियल्स रा जोंडा वीडियो टा देखाइला, that has been also clarified a lot of things जोंडा को ये मो पीपीटी भीतर रखिछि. So I am just skipping एटा कोन काम करतो पैसा काम करनी. So एटार म आपन खाली कहबी कि जेतबेले जाउची
कौन कौन जीवा दरकार अच्छी आईएफआर हो सीआर हो सीएफआर कथा को आसु जेतल जाउची ग्राम सभा तल दउची ग्राम सभा गोटे फॉरवर्डिंग लेटर रहिबो टू द चेयरपर्सन ऑफ द एसडीएलसी ता संगे गाँव जो रिजोल्यूशन जो अप्रूवल रिजोल्यूशन गोटे कॉपी रहिबो वेरिफिकेशन ऑफ द रिपोर्ट जोटा को अछि वेरिफिकेशन ऑफ रिपोर्ट रहिबो क्लेमेंट रजिस्टर रहिबो क्लेम फॉर्म केबे जीवा कथा को नो एसडीएलसी डीएलसी पाखको एसडीएलसी पाखको दैट हैज टू बी विथ द ग्राम सभा बिकॉज़ द क्लेमेंट रजिस्टर रो कॉपी जाउची द क्लेमेंट रो ना एवरीथिंग दैट हैज बीन मेंशन जे तो हमर क्लेमेंट रजिस्टर मेंशन मेंटेन करा जाउनी सिटी पय सब क्लेम फॉर्म गुडा को पळे जाउची एटी आपन गोटे कथा मन रखियो पड़िबो ST department has issued a letter in the 2010 कि बहुत जगह ग्राम सभा माने बहुत दूर रे अछंती सेमान आनी के कहा को देबे आगुर जति क्लेम आसी छि हजी आइ छि बहुत क्लेम से कहा को देइचंती सेटा मध्ये ट्रेसेबल हे पारु नाही सेते पय एटा को कुआ गला म चीफ सेक्रेटरी मते चिठी लिखिथिले जे तो ग्राम सभा दोउची से पंचायत को देबे किंतु पंचायत रो सेक्रेटरी इज द member secretary in the FRC so ग्राम सभा अप्रूवल कला परे पंचायत को जीवो पंचायत ता रजिस्टर रे ताको एंटर करिवो देन पंचायत हैज टू टेक द ऑल द क्लेम्स टू द एसडीएलसी एति पय पंचायत को तार जो टीए तार यातायात खर्च मध्ये दिया जीवो जोटा को आपनकर एसटी डिपार्टमेंट इज गिविंग ए मनी टू द ऑल द डीडब्ल्यूओ और पीआईटीडी for the FR implementation करिया पई सेत्रे प्रोविजन अछि अपन 2010 रे चिट्ठी जाईतिला and if you want that letter I think that can also be अपन एससी एसटी डिपार्टमेंट रो वेबसाइट रे उटे अछि जो जत्ते लेटर उडा के इशू करा जाईची तार कंपोडियम मध्ये सेठी अवेलेबल अछि अपन 2010 रे से लेटर ता जदि खोजिबे you can also get that letter जोंटी की इवन क्लियर प्रोविजन करा जाईची से जो नै की जीवो कारण एटा को रहिबा दरकार अछि गुटे कॉपी पंचायती राज आपन ग्राम पंचायत पाखरे कारण म आपन एटू गुटे केस कहिबी जेता बळे जगतसिंहपुर रे केस चलीथिला पुष्को केस को धरि की हाई कोर्ट पचरिला वेयर इज द ग्राम पंचायत पाखरेटा अछि की ग्राम पंचायत रेकॉर्ड ताकू तमे शो करो जे तो सेटा को करा गला देन हाई कोर्ट पचला तमे ग्राम पंचायत को केमडी बाईपास करी तो बहुत रोचे कि बहुत समय कारण गाँ लोक दूर आसो एसडीएलसी पाखे पहुंचबो से एडीडब्ल्यूसी छुट्टी थे से क्या दब कौन कर दे डोंट से पंचायत को दियो पंचायत पाखे रजिस्टर रहिबो एंटर हबो पंचायत तार कॉपी नहीं दबो तार टीए तार ट्रैवल कॉस्ट को ट्राइबल डिपार्टमेंट एसएसटी डिपार्टमेंट इज गोइंग टू बी एट दैट कॉस्ट तो मत रोचे कि दिस इज द मैप रो जीवो आ एविडेंसेस कॉपी ता संगे अटैच हो एविडेंसेस गुडा कईटा रही निस्तारी पत्र ट्रेडिशनल ग्रेजिंग ग्राउंड एमएफपी मत रही सेटा कौन बी मटेरियल भीतर पूरा भल रखाई आ गोटे कथा कहबी कि बहुत समय जो कम्युनिटी राइट पई अछि बा सीएफआर राइट पई अछि आपणकर डीएफओ रायगड़ा रे गोटे रिव्यू मीटिंग बेल को कहितले से डीएफओ का नाम मने पडु नै से डीएफओ कहितले हम जो वर्किंग प्लान अछि वर्किंग प्लान रे there is a right and concession working plan भीतर गोटे चैप्टर अछि if you are also xerox ताकू करिकी जदि सेटा को ता संगे जोड़ी दिया जिवो ताले that can also serve as a evidence on the community right से community right रा I think you don't require the any evidences I think कि अपन एसएसटी डिपार्टमेंट रो वेबसाइट भीतर you can get most of the evidences जदि सिटी नाइस दैट वी आर ट्राइंग टू अपलोड ऑल द एविडेंसेस जापर कि आपण सिटी एक्सेस करि परिबे आ मोर किन मन अछि 2009 12 14 15 पर्यंत जते पीआईटीडी मानकर डीडब्ल्यू को ट्रेनिंग करा आइतला समस्त को सीडी रे दिया जाइतिला जते एविडेंसेस गुडा को रहिछि जदि कोन सी पीआईटीडी का पाखरे बा डीडब्ल्यू पाखरे से एविडेंसेस गुडा को नाही जस्ट आपण विश्व रूप संगे कथा वार्ता करंतु and I think we can ensure that ki all evidences अपन पाखरे available हे जाई पारिबो सर
अच्छा छाड़ छोड़ा काटो छाड़ छोड़ा को ये कर दिया जो एई तो गुटे कथा हम आपन को कथाटा रखिबी कि आपण कौन से पर्टिकुलर एविडेंसेस को यू कैन नॉट आस्क एटा को नथिले हमें दबु नाही राइट that is not the under the law you have to look into the evidences vitre there are lot of things openly even the people can take their smashan photograph ko that can they can attach that can also serve as evidence जदि गाँव बुढ़ा बर गछ अछि जोंटा को तांकर समान से रखी बा तांकर सेपरेट एरिया अछि तार फोटो नेकी जदि जोड़ी देबे that can also serve as evidence so motor which is very open ended अपन देखिए एसएसटी डिपार्टमेंट हैज डन ए मैपिंग जोटा को एफआरए एटलास करथिले हमर पाखा पाखी 32,000 गां पोटेंशियल गां अछि but till that we are able to only 4,000 villages who we have reached out आउरी पाखा पाखी 28,000 गां रहिछि ए जो जंगल जमी मिशन जोटा को आरंभ हो that is the 1 year भितरे this is the target what the state government is targeting to complete the processes so within the next 1.5 year भितरे कि ताके में 32,000 गांव रे कम्युनिटी राइट दे परिबा सब फॉरेस्ट विलेज को कन्वर्ट करि परिबा हैबिटेट राइट को दिया जाय परिबो so lot of things are there so now we can have a open discussion for this one is there mama there are certain questions are there I will take the questions. Yes. आजा Okay. आजा पार्टिसिपेंट मान को कहो कि if they have any questions they should be allowed we can take the questions also Okay. So thank you, Giri bhai. Thank you for and as always you have been supporting the department, supporting the SC/ST/RTI, and as always you have been really the presentation and the training. I hope the people have understood it very clearly. And now I would open up the house for any doubt clarification and questions. If the participants they have, you have been unmuted, and you can also raise your hand so that we can reach to individually each one of you. And I can also see that in the chat boxes, there are certain questions. So if you have certain questions, you can please raise your hands. Yeah. Can you please, Vinod, can you please unmute Anjali from Koira? Anjali from Koira, you can please. Ajit. I may be. Good evening. What Hello. Okay. Ajit, if Ajit or Anjali, whoever, you both have raised your hands, you can please ask your question. मैडम नमस्कार मैडम नमस्कार आगे अंजलि अंजलि कौन तू आपण स्पॉटलाइट रे अछंती आपण प्लीज कौन मैडम हेलो मैडम नमस्कार एक्चुअली मु पचारथिली कि हमर जो माइनॉरिटी मानन को अलाउ करा जाउ नथिला तो माइनॉरिटी भी माने अप्लाई करि परिबे तो ता ऊपर टिके जदि कहि पारंते मैडम हेले क्लियर होई जानते हम सुनतु जंगल अधिकार आईन भितरे माइनॉरिटी ओबीसी ये सब किछि रो प्रोविजन नाही सेते दुईटा जाति अछि गोटा लागी फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल ट्राइब आ गोटा लागी ओटीएफटी जो माने फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल ट्राइब जो माने शेड्यूल ट्राइब हमर 62 प्रकार अछन 62 प्रकार जाति को छाडी दे सला पर आ जेते रहले ऑल आर ओटीएफटी हला ना ता भितरे समस्त आसी पाई किंतु गोटे कथा ता भितर अछि दे हैव टू प्रूव दैट कि दे आर प्राइमरली डिपेंडिंग ऑन द फॉरेस्ट रिसोर्स फॉर देयर लाइवलीहुड ओके सर एक्चुअली आ गोटे क्वेश्चन थिला सर कि हमर ए जो कहूतिले कि बिलो एज हमर नाबालक माने क्लेम करि पारिबे कि नाही मु आपन को कहिले कि जो पीपीटी डा को मध्ये शेयर करा जिवो लॉ रे कोठी लेखा जाय नै माइनर माने क्लेम करि परिबे नाही काई आदिवासी अंचल रे बहुत जगह हम देखिछु जो मानकर मां माने दीटा तीनटा जगह बाहाई पारंती से माने छाडी के पळे जानती पिला माने को अजा को घरे
सेठी से जो जमीर चाष करतो से पिला ता पिला बळु हेकी से जमीर चाष करिथाय जदि से आजी नाबालक हेकी रहिकी he can claim okay he can claim that land law is not prohibiting anything law is very who is cultivating the forest land he is a forest right claimant who is depending on the forest he is a forest right claimant so हमको एटा को देखिया को पड़िबो जो माने ओटीएफडीस अछंती हला ना ओटीएफडीस पाखरे 13 डिसेंबर 2005 पूर्वरु सेमा जमीर चाष करूथिबे आउ हमर 31 डिसेंबर 2007 ना 7 हला जो माने कि जमी रहे 13 डिसेंबर 2005 पूर्वरु आ 31 हमर जुलाई रो 2007 पर्यंत they are cultivating the land occupy करथुबे लैंड टाकू ता से माने पाइले किंतु बहु जगह हमें देखिचु कि लोक मानकर सेठी लेखाई हमर non possession of the land 20% claims have been rejected in the state non possession हम जानिलु केमिति the thing is that मु जदी से जमीरे चाष करथिबे काली मते आसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मते पिटिथिबो मनार केस करिथिबो तले मु से जमी को जीवा पय साहस करिवि नाही so in that case हमें जिते बळे क्लेम गुडा को आणुचु से क्लेम रो हिस्ट्री हमको काढिया को पड़िबो so हमें खाली गुडे क्लेम फॉर्म मिता खाली अप्लाई करि देले जने टाइटल पाइबो नाही जदी से लोक 2007 पर्यंत से जमीर ऑक्युपाई करू नाही he has to give a statement why he is not occupying but he used to occupy that land prior to the 13th December 2005 so हमें जेपन सेगुडा को न करूचु इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर द एचडीएलसी एंड द डीएलसी टू टेक एनी डिसीजन अंजलि गोटे क्वेश्चन अंजलि ए क्वेश्चन टा हमें टिके आउ टिके सुनिबा हम संगे विश्वरूप साहू बाबू भी अछंती विश्वरूप प्लीज कोन नहीं अंजलि मो खाली गोटे इशू जानिबा थिला आपण जो माइनर कथा कहिए लागी गोटे इशू देखिबे माइनर एज ऑन कट ऑफ डेट जोटा कि 13 डिसेंबर 2005 कारण आपण देखो तो एक्ट लागू हवाटा ऑलमोस्ट 15 वर्ष हो गलानी तेनु वर्तमान जने 2-3 वर्ष तळे जति माइनर हिसाब से क्लेम करूची देन इट विल बी कम अंडर क्वेश्चन मार्क आपण देखंतु माने आपण जति प्रैक्टिकल हेबे जते बळे गोटे क्लेम को आपण जज करिए बा वेरिफिकेशन पे झोटिया देलेनी अरे मैडम हैं तमे श्रावण मास सला से झलो देलेनी बोली श्रावण मास सला झोलो टिके देलेनी बिना प्याज रसुन रे कि आपण माने प्लीज करंतु नाही क्रॉस टॉकिंग करंतु नाही क्रॉस टॉकिंग करले आपण मानकर वॉइस एपट को सुना जाउची पूरा श्रावण मासर कथा आपण काइंडली कहंतु नाही ड्यूरिंग द मीटिंग अजित को ओके नाउ वी हैव अजित सर जने थिले से हां प्लीज आपण प्लीज मैडम नमस्कार सोशल मोबिलाइजर टीडिया तुम्बा मैडम राइट हाँ मैडम मोर गोटे क्वेश्चन थिला कि जो हमर एबे जो घाट कटिंग पय हमर प्लान दैचंती सीसीडी फंड रो किंतु सेटा रिजर्व फॉरेस्ट अछि बोले हमर हेई परने मैडम तारा केमते सॉर्ट आउट करियबो रास्ता पय हमर जोटा अछि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिजर्व फॉरेस्ट अछि तो आको मैडम तांको गां को रास्ता नाही तो मैडम सेटा को हमें केमते सॉर्ट आउट करि परबो एफआरए माने जो सीएफआर न करिके सुनो तो आपन को जोंडा रखितली कि जो डेवलपमेंटल फैसिलिटीज पाई तार गोटे अलगा गाइडलाइन आपन को म स्टेट गवर्नमेंट बा सेंट्रल गवर्नमेंट बा जिला परिषद या ऊपर प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट हे परिबो जेहेतु टीडीए तुम्बा डेवलपमेंट एजेंसी से गुटे होची स्टेट गवर्नमेंट रो गुटे एजेंट माने गुटे डिपार्टमेंट से गुटे पार्ट दे कैन बी ए प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट सेमा जे प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट हेबे से ता पे गुटे अलगा फॉर्मेट अछि फॉर्म ए अछि से फॉर्म ये क ख ग फॉर्म ताकू कंफ्यूज करिवो नाही ता पे अलगा फॉर्मेट अछि से प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट हिसाब रे से गुटे प्रोजेक्ट तयारी करिवो को गां को रास्ता दरकार अछि केते रास्ता दरकार अछि केते जमीर ताकू दरकार अछि से गुटे प्रोजेक्ट प्रपोजल से मा तयारी करिवे प्रोजेक्ट प्रपोजल तयारी कला परे आपनकर जो टीडीए अछंती टीडीए से प्रोजेक्ट प्रपोजल टाकू ग्राम सभा उपस्थापन करिवे जो जो ग्राम सभा से रास्ता रे बेनिफिट हेबे से मान ताकू अप्रूव करिवे
तार्थ से रास्ता कौन सी लोकर अधिकार को विच्युति करू नाही से जो अप्रूवल टाको दउची से कौन सी लोकर अधिकार को सेतरे क्षुण्ण करू नाही से अप्रूवल हल्ला परे ए जो फॉर्म ए टाको पूर्ण करथिबे आ ग्राम सभा जो रिजोल्यूशन तार कॉपी देबे का को रेंज ऑफिसर जो दिन से प्रोजेक्ट प्रपोजल पाइबे रेंज ऑफिसर तार 30 दिन भीतर तार इंक्वायरी करिवे इंक्वायरी करी से प्रथम देखिबे जो रास्ता को कराई ता पे अल्टरनेटिव लैंड किछि अछि कि ना केवल रिजर्व फॉरेस्ट भीतर गले ही हेई पारिबो तापर जदि से अल्टरनेटिव लैंड किछि नथिबो से तापर अप्रूवल देबे से अप्रूवल से उडे रिकमेंडेशन उडे इंक्वायरी रिपोर्ट क्रिएट करिवे इंक्वायरी रिपोर्ट कर साला परे से पठेबे डीएफओ कर कंसीडरेशन पाई डीएफओ से रिपोर्ट टाको देखिला परे डीएफओ हां करि पारंती डीएफओ ना मध्य करि पारंती हला जति डीएफओ ना करिले जति डीएलसी रो पुनी से प्रपोजल टाको जति डीएलसी हां करि देले डीएफओ मना करले भी से काम हबो नाही डीएलसी डिसीजन इज अ फाइनल एंड बाइंडिंग सो एथि पई मत रहउची कि आपन को आसंता काली भी गुटे सेशन जोंडी रहिची सेठी भी आपन या पर आलोचना करि परिबे ए पूरा प्रोसेस टा को केमिति भाबरे परिवार अछि किंतु गुटे प्रोजेक्ट टीडीए पाखरे एतिर मन रखिबे जो दिन आपन को अप्रूवल मिलला आपण गुटे वर्ष भीतर काम आरंभ करिवार अछि यदि गुटे वर्ष भीतर काम आरंभ न करि पाले ताले से प्रोजेक्ट टा को नॉल एंड भॉइड हे जिवो पुनी वर्ष पर आउथरे आपन फ्रेश रे अप्लाई करिया को पड़िबो सर आ गोटे थिला सर आपण जो पीपीटी करछन हमहु टे सर इधर ऑफिस मेल आईडी किंबा व्हाट्सएप रे जदी शेयर कर देबे भलो हो सर पीपीटी आ जति की एफआरए रिसोर्सेस करिके ना आपण एससी एसटी आरटीआई रो वेबसाइट को जिबे scstrti.in वेबसाइट को जिबे वेबसाइट रे एफआरए रिसोर्सेस करिके ना आपण से जो मेनू बार रे देखिबे ड्रॉप डाउन रे देखिबे ड्रॉप डाउन रे एफआरए रिसोर्सेस रे सबो मटेरियल आपण ट्रेनिंग मैनुअल टू आरंभ करिके हमरो ऑडियो विजुअल प्लस हमरो कंपेंडियम आ आपनकर एफआरए एटलस जोटा हेते सबो एंटायरली हमें सेठी अपलोड करिचु और तथापि आपनकर एबे चैट बॉक्स रे भी ए प्रेजेंटेशन सेपरेटली भी हमें पठै सारिचु ऑलरेडी आपण डाउनलोड करते परिबे प्लस जो यूट्यूब चैनल SCSTRTI रो यूट्यूब चैनल रे हमरो ऑडियो विजुअल भी अपलोडेड अछि एनीवन कैन व्यू दैट यू प्लीज यूटिलाइज दैट all the resources as your training modules whenever anyone is doing the training at the field level. We will go to the chat boxes. Chat box kindly please take a scroll karo. I can't do it from here. ऊपर आउट टिके स्टार्टिंग रो देखि देबा भाई डब्ल्यू भाई आगे डब्ल्यू मन को नहीं डब्ल्यू बलांगीर रोड पचारी जंते एविडेंस रिगार्डिंग ओटीएफटी ओके सो एविडेंस जोंडा को कहैतला जेंति म आपन को कहिली देखो तो दीटा एविडेंसेस दरकार अछि प्रथम एविडेंस हला अछि कि से गार बासिंदा जोंडा को आपन को ईवी मटेरियल आपन देखि पारिले कोटा को एविडेंसेस हेई पारि वोटर का ही पारिबो तार बॉडी कार्ड ही पारिबो तार रेशन कार्ड ही पारिबो because that is the first requirement he is the inhabitant of that village inhabitant of that village तापर 13 डिसेंबर 2005 पूर्वरु से जमी रे चाष करूची ना नाही ता पय तार एविडेंसेस हेई पारि जति तानर केबे केस हेईची जति रेवेन्यू जंगल हेईची ताले तानर से केबे फाइन देईची कि फाइन रसीद that can be done ताप आउटलर सेमा तीन जनरेशन ला अछंती ना नाही तीन जनरेशन कथा कहला को जीनियोलॉजी जो फैमिली रो जीनियोलॉजी अछि मु अछि मो बापा का ना तांको बापा का ना तांको बापा का ना यदि हमें तीनटा तांकर फैमिली रो जीनियोलॉजी काढी की से मो बापा का बापा के थिला तांकर केतरा पो थिले पुन के जो से जीनियोलॉजी दैट कैन आल्सो प्रूव कि एबाने एति की वर्ष धरि की से भीतर रहिछन बिकॉज़ ग्राम सभा इज आल्सो कंसीडर जो एविडेंसेस गुडा को लोक दउचंती से एविडेंसेस ग्राम सभा हैज टू अप्रूव सो जदि ग्राम सभा सेटा को अप्रूव करके पठौची I think that is not a biggest problem for the SDLC or DLC to take any decision. If anything happens in the future, the Gram Sabha is responsible for that one. And if you see, I can tell you, the only districts by Sundargarh and the Malkanagiri. I think it's the two districts where they have given the titles to the OTFDs. ये दीटा जिला देइचंती मोर मने अछि विनल कृष्णन जेतबे थिले कलेक्टर इन द मालकानगिरी रे
से कहले आमे के न दबा पई why we are going to deny if the Gram Sabha is approving so we can give so that is the way किंतु तार अर्थ नुह कारण the law is not intended as a scheme जमी बंटार ये गोटे स्कीम नुह जो लोक माने 13 डिसेंबर 2005 पूर्व करूचंती से माने ताकू तापर से माने अधिकार को मागी पारिबे किंतु मते ओटीएफडी क्षेत्र रे आपन को टिके कारण आपन देखिबे जो मन कोरापुट रो आसी चंत अनडिवाइडेड कोरापुट रे हमर शेड्यूलिंग प्रोसेस केबे आरंभ होला शेड्यूल पूर्वरु हमर 165 टा जाति को एबोरिजिनल ट्राइब्स हिसाब रे कॉलोनियल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करिथिला आउ आज आपन देखुजन जो पाण ताप संगरे अछि हमर से जो गजपति जिल्ला रे जो कास्ट उडाक दे यूज्ड टू बी कंसीडर्ड एज एबोरिजिनल ट्राइब्स किंतु शेड्यूलिंग बेलो को सेमान को एबोरिजिनल ट्राइब भीतर को काढी दे कि तांको एससी भीतर का ओबीसी भीतर रखा गला बट दे आर आल्सो स्टेइंग देयर आपन देखिबे नयागढ़ कथा मु कहबी नयागढ़ कटक ढेंकानाल अनुगुल देयर आर द पीपल सेटलमेंट प्रोसेस भीतर शहर जस्ट छुटिया स्पेलिंग मिस्टेक जो 2000 कंसीडर एज ओटीएफडी कंध लिखि देलु उडिया कंध वी आर रिजेक्टिंग देयर क्लेम जदि तांको बापा अजांको पाखरे जदि तांको पाखरे कोनसी जमीर पट्टा पाउती अछि कंध लेखा आइछि and they are proving that ki they are सेमानकर परिवार रो सदस्य that can be considered आपन को मोटे रिक्वेस्ट करिबी that can be also available गुटे मिनिट एससीएसटी डिपार्टमेंट एससीएसटी आरटीआई ये जो एफएक्यू टा को उडिया रे ट्रांसलेट से माने करिचन सब अछि सो मतलब जी ए उडिया रे जो एफएक्यू टा को ट्रांसलेट कराई कि एटा बहुत क्लियरली सब जिंस ओटीएफटी आपन जते प्रश्न रही छि ना सेही थरे से एफएक्यू टा थरे पढंतु इंग्लिश रे भी अवेलेबल अछि उडिया रे भी अवेलेबल अछि आपन सेटा को रेफर करि परिबे कारण एटा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैज इशूड दिस वन So I can see in the chat boxes, I am not able to get any questions as such. One second. Sir, please make a focus on FRA project extension. So this is some administrative thing. We'll take it later on. Please clarify regarding members of DLC relating. So DFO are more than one. Okay. मैं आपन को जेमते कहले DLC रे representative of a forest department. DFO से कथा को लिखि चंती जदि if there are more than one DFO सेठी आपनकर जे कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट अछंती he can be member कारण आमे गोटे जिला भीतर देखिछु 5टा 6टा फॉरेस्ट डिवीजन अछि and all the DFO are we are inviting and सेतबे जेतबे रिजोल्यूशन अछि बिन PITDA DWO किछ कहि पारंती नै कारण DFO मानक संख्या एते अधिका थाए even they cannot say anything and lot of time the claims have been rejected so you need to draw मो सेतबे PPT लिखिछि अपन पर्टिकुलर से सेक्शन से रूल्स सेटा को पढंतु कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जने रहिबो डीएफओ जने रहिबे यदि डीएफओ मोर देन अछंती ताले तांका ऊपर ऑफिसर के अछि ही हैज टू बी द मेंबर ता अर्थ न कि सेठी प्रोजेक्ट टाइगर रो डीएफओ रहिबे सेठी टेरिटोरियल डीएफओ रहिबे You can give the example of Mayurbhanj, which is the largest district. largest district अछि सेठी 4टा 5टा डीएफओ is the member in the DLC that is not the law यदि सेठी 4 सेठी में कोला 3 आपनकर पंचायती जिला परिषद मेंबर 3 हैला सरकार बैलेंस रखा है you have to see while the law has the rules रे कमिटी गठन करा है कि why they have kept the balance लोकंकर 3 सरकारकर 3 आछि रेवेन्यू डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करचंती कलेक्टर ट्राइबल डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करचंती पीआईटीडी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करचंती आइदर डीएफओ और द chief conservator of the forest so these are the 3 officers has to be there we can have a special invitee but they cannot be the member in the DLC So related question is there, what is the rule for keeping ACCF as member in DLC? ACCF assistant conservator forest माने
देखो मतलब जो डीएफओ को ऊपर रैंक टा को कौन अछि बिकॉज़ आई कैन नॉट रिकॉल डीएफओ को ऊपर की एससीएफ अछंती कि सीएफ अछंती कि डीसीएफ अछंती तो तांका बे रीजनल कंजर्वेटर अछंती कि अछंती यू हैव टू सी हु इज द डीएफओ इफ देयर आर मोर देन वन डीएफओ देन यू हैव टू सी हु से डीएफओ रिपोर्टिंग अथॉरिटी की अछंती दैट पर्सन इज गोइंग टू बी द मेंबर One question is very interesting. Good evening, all of you, respected sir, whatever. More question thila ki Keonjhar district re JDA Gonasika Tahsil Bansapal re kichi area ku jo juango pidha achi semanu ku hamlet wise monda ghara diya jibo ki देखो मत रुचि जदि मंडा घर that is their part of their cultural identity जदि मंडा घर जंगल जमी भितर अछि ताले they are going to कारण जो habitat right दिया होची ना that is giving a territorial right ए आईएफआर बोले 4 एकड़ 5 एकड़ की 2 डिसमिल जगह कथा को आसु नाही किंतु जदि मंडा घर रेवेन्यू रो अछि हला रेवेन्यू जमी रे अछि then that has to be decided by the state government सेति भाई जो habitat claim गुडा को सबमिट कराई छी एसएसटी रिसर्च इंस्टीट्यूट माध्यम रे सेत्र आपण देखिबे से माने एक्सक्लूड करिसंती रेवेन्यू लैंड को टोटल हैबिटेट लैंड हला एति की 100 एकड़ भितरु 20 एकड़ हला होची जंगल जमी 80 एकड़ हला रेवेन्यू तो फॉरेस्ट राइट एक्ट इज ओनली एप्लीकेबल ऑन द फॉरेस्ट लैंड जुआंगर तांकर कल्चरल मतलब एसोसिएशन हिसाब रे ही रही छी कि मंडो घर तांकर प्रत्येकटा गां मुंड सामना रे ही रही छी जोटा को से माने पूजा करछंती तो प्रत्येकटा गां रे आपण जति सेटा फॉरेस्ट एरिया भितर रही छी तो ऑटोमेटिकली सेटा हैबिटेट राइट्स भितर से माने क्लेम करि परिबे नचेत भी से मानकर सेटा एरिया भितर निहाती तांकर FRA is not a panacea to all the issues. So मंडो घर तांकर कल्चरल राइट्स हिसाब रे डेफिनेटली जाउची जदी FRA अंडर रे सेटा से माने क्लेम करि परनांती ताले रेवेन्यू लॉस भितरे भी सेटा को से माने तांकर राइट्स ता को क्लेम करि परिबे किबा सेटल करि परिबे तब आ गोटे प्रश्नटी आसीची कि गोटे परिवार केते जण आईएफआर टाइटल क्लेम करि पारे भाई देखंतु मो त मो एपन को ए कथाटा को रखिली द लॉ इज सेइंग द क्लेमेंट who is cultivating who is depending on the forest land if in a family dita loko koruchanti ba trinita loko koruchanti they can be a claimant free claimant the law is not putting any boundary gutte parivaru 5 jan kari pare 10 jan kari pare semiti kichi nahi but the person has to prove that ki se jami ko chasa korchi 13 December 2005 पूर्व गोटे भल क्वेश्चन अछि कि असिस्टेंट चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट टू बी द मेंबर बट अंडर which rule of FRA it will be covered so that collector cum chairman can intimate about his membership in the DLC आपण रूल्स रे जोंटी DLC रो फॉर्मेशन जोंडा रही छी आपण सेठी देखंतु आपण एसडीएच रो भी देखिबे जोंटी लिखा है मोर देन सेठी अछि सेठी डेप्यूटी कंजर्वेटर रे की रहिबे सो दे आर आपण सेठी डीएफओस लिखा है नहीं DFO लिखा है वन रिप्रेजेंटेटिव सो आपण को सेटा को पढ़िया को पड़िबो एवं जो एफएक्ट को जाई छी ता पर जो लेटर उडा के जाई छी सेटा बहुत क्लैरिफाई या ऊपर करा जाई छी आपण जे दरकार होची मो कहबी सेटा को से लेटर उडा का आपण पाको को फॉरवर्ड कर देबे ताकि यू कैन draw the attention of the entire compendium apanokor FRA resources को आपण काइंडली जानतु प्लीज विजिट दैट scstrti.in वेबसाइट रे ड्रॉप डाउन होची मेनू रो FRA रिसोर्सेस आपनकर FRA रिलेटेड समस्त जत्तिको आपनकर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट वी हैव अपलोडेड देयर so the recent compendium jota 2016 re heitila which carries all these letters notifications Odisha government ro even neighboring states ro bhi and as well as Ministry of Tribal Affairs ro bhi everything is uploaded there in the website. So kindly have a look. Still then if you separately want any such resources from our side, then Viswarup is there, I am there, you can connect to us anytime and we'll be helping you out. So now we'll go to the next session. Only one thing I want to also tell you, the FRA is not only, the thing is not only applicable to the rural areas, it is also applicable in urban areas, municipality areas, NAC areas, Esopu Jagar FRA is applicable. And the department also given a letter how to constitute the ward sabhas in the municipality area
ये सब जगह रे किंतु आज पर्यंत हमर म्युनिसिपालिटी एरिया एनएसी एरिया भितरे वार्ड सभा रे एफआरसी कॉन्स्टिट्यूट है नहीं। So, thank you. I almost covered all the. Yeah, you have covered almost all the sessions. Thank you so much, Shri Y. Giri Rao sir. Thank you. And we will move on to the next session. And I would welcome Biswarup Sahu, Project Officer UNDP FRSL of the state. Sir, kindly. Thank you, Giri bhai, for this charming and enlightening presentation. समस्त शुणी पार्टी आईटा भी आशा करुँचे गिरी भाई जहाँ कहले यहाँ आपण मान बहुत किसी इनसाइट देथिबो फॉरेस्ट राइट एक्ट उपरे तार इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस उपरे आउ जहाँ भी किसी फील्ड आपण इश्यू देखुचंती बहुत गुडा इश्यूर आंसर आपण पाई जाइथिबे। ठीक तो मोर वर्तमान मु जो सेशन टा नेबी एटा एक्जेक्टली गिरी भाई को होला एते इंटरेस्टिंग सेशन नुहे एदर टिके बोरिंग सेशन हबो आपण मान को पई एदर क्वेश्चन आंसर बेसी हबो। अब मु आशा करबी एटा बेसी पार्टिसिपेटरी हबो कारण जहाँ मु कहबी एटा आपण माने जहाँ देइचंती मु केवल जस्ट सेही जिंसटा को टिके समराइज करके आपण को सामना रे रखुची। आज आम पाखे अदर रिसोर्स पर्सन भी अच्छा से जो कंपाइलेशन ने जो गुड़ा चेंजेस बोटलनेक्स अच्छी बोली मुझे कहबी सेटा कहीं रोचे कहीं कौन कले से उठी जीव आपण मान भितर जहाँ किसी आइडियाज जहाँ एक्सपीरियंसेस रही आपन रखु आम चेष्टा करूँ से गुड़ा आपण मैंने केमिति ओवरकम करेंगे से आंसरटा देवाई बा जदि पॉसिबल न होची ताले अपकमिंग समय रे कोन कले सेटा को हम करि परिबा से जिंसटा ऊपर वर्कआउट करिया पई पीपीटा ये करतो How can I run? Slide click run करें. See तो put down. So it is the status. अपन जदि अपन देखिबे जोटा मीटिंग आरंभ रे बहुत डायरेक्टर आउ रिसोर्स पर्सन अपन तो शेयर करले वी आर वन ऑफ द लीडिंग स्टेट जेतबेला हमें देखुछु IFR क्लेम रिसीव तार क्लेम डिस्ट्रीब्यूशन तार पेंडिंग स्टेटस को देखिया ऑलमोस्ट हमें आशा करछु हम स्टेट रे अराउंड 1.5 लाख ही एलिजिबल क्लेमेंट थिबे जेते दूर हम IFR रो कथा कहूछु किंतु जेतबेले समान जिंसडा हमें CR और CFR पई देखिया जाउछु ता सिचुएशन इज कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्टरी जेतबेले IFR रे हमें कंट्री रे नंबर 1 स्टेट CR और CFR रे हमें हार्डली 10% कवर करि पारछि जोटा कि मो अपकमिंग स्लाइड रे मो आउटे इलाबोरेट करिवि कोन इश्यूज रहउछि एटा जो हमर ऑफिशियल्स माने रहि चंती एटा बेसिकली मु तांको कंसीडरेशन पई एठी रखुछि देखंतु दीज आर द 9 कंपोनेंट्स जोड़ा कि आम स्टेट गवर्नमेंट रो फॉर द टाइम बिंग फॉरेस्ट राइट एक्ट अंडर रे प्रायोरिटी एरियाज रही मेजर आपण मान जानि चंती हमें सुप्रीम कोर्ट रे एफिडेविट हम चीफ सेक्रेटरी फाइल करथिले जो अनुसार पाखापाखि 1,27,000 क्लेम जो रिजेक्टेड क्लेम डिस्पोज हबार थिला अर्थात पुणी रिव्यू करा जाइतांता रिव्यू करा गला परे वेदर दे आर सब्जेक्ट टू अप्रूवल और दे आर सब्जेक्ट टू रिजेक्शन सेटा डिसाइड करिवार थिला हमर वर्तमान जो 4.5 लाख टाइटल दिया गलानी
हमको तारो से सब आरआर करेक्शन आउ कन्वर्जेंस बहुत आम मानक वर्कफुट मैनर रे कंप्लीट करिवार थिला जो कि 2018 मसीह आम मान डिस्ट्रिक्ट मान को स्पेसिफिक फंड एलोकेशन भी करा जायछि किंतु तारो जो प्रोग्रेस टा मु अपकमिंग स्लाइड रे शेयर करिवि सेटा भी रिक्वायरमेंट रही एक्सप्लोरेट करिवार कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट विलेज जोटा कि आउटिका गुरु विशेष पर्सन माने शेयर करथिले जे ऑलरेडी आम स्टेट रे 14 टा गां कन्वर्ट ही सालानी पाखापाखि 70 सम और क्लेम फॉर्म्स आर एट डिफरेंट लेवल एट एसडीएलसी और डीएलसी लेवल और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और जोटा recognition of particularly vulnerable tribal group exactly in the last few months एटा गोटे emerging area हिसाब रे हम भितर आसी छी जोथरे एससी एसटी आरटीआई रो लीडरशिप रे हम पाखापाखि 11 टा जाको पीवीटीजी कम्युनिटी रो क्लेम फाइल करिछु आ जेमती आज कहिले हमरो बारिपदा रे केउझर रे ए सब जगह रे क्लेम बारिपदा रे वहां से एसटीएलसी डीएलसी को आसी रिटर्न हिची केउझर आज एसटीएलसी रे अप्रूव हिची तेणु सीटा प्रिंसिपल सेक्रेटरी मैडम भी लास्ट रिव्यू मीटिंग रे सब नोडल ऑफिसर्स मान को कहितले जे एही प्रोसेस टा एक्सप्लोरेट करिया पे जो क्लेम फॉर्म गुडा ऑलरेडी आसी गलानी ताको अप्रूव करिया पे सो दैट एटा कंट्री रे ही गोटे हमो स्टेट रो यूनिक अचीवमेंट रहिबो आउ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एफआरसी आउ डाटाबेस मैनेजमेंट डाटाबेस गोटे जगह जोटा हमर होय तो सबुठू कोन कहिबा सबुठू ग्रे एरिया जदि आमे कहिबा हम स्टेट रे तेन डाटाबेस आमे ता ऊपर भी आलोचना करिबा तो वर्तमान जदि मु क्विकली रन करि जिबी हमर जो इश्यूज रहिछि ताले रिव्यू ऑफ रिजेक्टेड क्लेम रे आहुरी 4068 क्लेम्स अछि डिस्पोज होआ पय जेते बेले कि डीसी जो लास्ट ईयर मीटिंग नैतिले से जो टाइमलाइन सेते आपण माने ही कमिट करिथिले आमे करि दउ बोली सेटा थिला सितंबर 2021 आउ सही अनुसार आपण मान को एम्पल ह्यूमन रिसोर्स भी बहुत जगह रे एम्प्लॉय कराइतला तेबे भी आज सुंदरगढ़ रे मैक्सिमम 1562 क्लेम्स फॉलोड विथ खोर्धा 742 बालेश्वर 658 जाजपुर 543 केंद्रापड़ा 383 अनुगुल 180 जो ऑफिशियल्स माने एठी प्रेजेंट अछंती ताको गोटे रिक्वेस्ट रहइबो एई जो 4068 आईफआर क्लेम्स रहिला पेंडिंग डिस्पोजल पई ताको काइंडली क्विकली ताको डिस्पोज करंतु आ जेमते हम रिसर्च पर्सन आउटियारो शेयर करथले जेतोळे हम डिस्पोजल प्रोसेस को आगो को नउचू आपण माने तारो रेकॉर्ड कीपिंग पार्ट ताको नजर रे ध्यान रस रखुंती हम पाखरे जो क्लेम फॉर्म तार जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट्स ग्राम सभा रो रिजोल्यूशंस these documents needs to be kept at that level perfectly आउ आमे आपन को ऑलरेडी डाटाबेस ही मागिथिलु जो लक्षे 27000 क्लेम डिस्पोज हेछि आपन को लेवल ले आपन तारो डिटेल्स प्रोवाइड करन कारण आपन जानि जति सेते आउ गोटे भी इंस्ट्रक्शन थिला जे जो जेति के क्लेम हमें रिजेक्ट करबा डिजिटल पॉलीगन डेवलप करिया पई हमकु सेति की रो जियो लोकेशन पॉइंट्स पठेबा को पड़िबो एफएसआई फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया सर सॉरी सर डीडब्ल्यू केंद्रापड़ा हां मैडम कोतु हां सर मोर जो 383 पेंडिंग अछि आज्ञा सर मोर गोटे प्रॉब्लम अछि सजेशन सर से रिजेक्टेड क्लेम गुडी को हमें ग्राम सभा को रिटर्न करथिलु 383 टा आउथरेटा एसटी लोक मानकर अछि से ग्राम सभा हमें पीओ को देथिलु माने ताकर पंचायत ऑफिसर को देथिलु पीए आज्ञा से कोडे हजे दैछंती तो से माने रिजेक्टेड क्लेम गुडी को ताका ऑफिस रे नाही सर मु निजे भी देखि कि आसीली सर एई केस रे मु गा लोक मानकू जो विलेज तीनटा थिला ताकू डाकी की मीटिंग भी करली मु कहले छी आपण आउ थरे हमकु दियंतु आउ हम पाखरे क्लेम हजी जाईची किंतु एबे सर हां हां कहले सर आज पर्यंत से माने दउ नाते एई केस रे हम सर कोन करि पारी आपण तो एक्शन सेटोंती मु केवल सेटिंग सजेस्ट करि पारी जे आपण आउ थरे जो क्लेम फॉर्म हजी जाईची ताकू रीजनरेट करबा छडा सेकंड ऑप्शन हम पाखरे वर्तमान किछि ना नहीं नहीं मु रीजनरेट माने रिकन्स्टिट्यूट करबा पई मु ग्राम सभा जो जो विलेजर्स माने करते ताको लिस्ट भी देली आपण मानकर ए क्लेम हमें आको फेरई देइथिलु जेहेतु एटी मिसप्लेस हे जाईची आपण माने आउ थरे क्लेम दियंतु हमें आपण को क्लेम कंसीडर करिबु
ଆଜ୍ଞା किंतु सेमाने आउ दबाकू नाराज माने धरा छुआ आउ दउना तेणु मोर पेंडिंग टा सर गड़िबो एमती को कोन करि परिबी मैडम मोर माने पर्सनली सर मु पर्सनली एक्शन नेछि माने निजे डंगा रे माने गत वर्ष माने 2021 अगस्त मासरे मु निजे तांको पाखु जाई कि ए विषय कहली लोक 150 200 खंड आसीथिले सर आउ सर प्रॉब्लम कोन हिची कि डुप्लीकेट कॉपी नहीं ना किछि डुप्लीकेट कॉपी नाही थिले तो मु मागंतिनी मैडम माने एमन जतले देइछंती ओरिजिनल डाको रिटर्न करछंती आ खाली रिसिप्ट कॉपी खाता रे से जो रिसीव करके नेले सेति को जा अछि मैडम मो लिस्ट खाली अछि आज्ञा मैडम सर और ये आज्ञा कथा आपण रखी सेते हम बारंबार से कोठी 2009 रे जो लेटर ता जाईची सेटा तो एबे का केस ता हला ना ना आ एमिति बहुत जगह हेची एमिति बहुत जगह क्लेम रो कोनसी खबर भी मिलु नाही जोटा देखा हेची बहुत जगह हेची हला जति आपण देखु से प्रकार हेची आपण सजेस्ट करिवे कारण एमिति घटना भी केता जगह हेची आपण डीएलसी रे हला कोन करबा डीएलसी रे ये मैटर तो मैटर को किसी आलोचना करा जाओ डीएलसी जति पति नाला नहीं स्टेट डिपार्टमेंट को कुआ जीवो कि आमे जो क्लेम रिसीप्ट को देखैछु एई कारण जो क्लेम रो किछि हेई पाबु नाही सेति पय समा एमपीआर रे हम एति पय करेक्शन करिलु आपण जेता बेले एटा डीएलसी रो आलोचना करिवे एंड तो भी अटैक अपन एमपीआर पठौचंती एटा अपन स्टाफ लिखि देबे कि हम डीएलसी विषय कराबला ए क्लेम मोडा को आसीला त पठाइला कि होजिबला we are also trying once again to get the ये so for the time being हमें जो एटा को पेंडिंग क्लेम हिसाब देखा न जाओ तो अपन सेटा करबे त से अनुसार आउ थे सॉरी सर मुटिके क्लियर हे पलेनी डीएलसी रे हम आलोचना करिबा तापरे रियल मैडम मु आसंता काली डिपार्टमेंट रे एटा कथा है कि अपन जणैबे ठीक अछि अदरवाइज मु काली ऑफिस आवर अपन कॉल करी 12टा भाई रे देखिया एटा केमति कोन वर्कआउट करिया आज्ञा नमस्कार मु सर डीडब्ल्यू ऑफिस जाजपुर को होची सर हमर रिजेक्टेड क्लेम थिला 2971 जो रिपोर्ट थिला सर तादिरो हमर 2677 रिजेक्ट सर हियरिंग हेई गईची आ 255 समथिंग बाकी अछि सर ठीक अछि मैडम एटा अपन एमपीआर अपडेट करी कि नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंथ रो पठे देबे अपन तो जुलाई रिपोर्ट अनुसार रिपोर्ट आसी तनो अपन सेटा पठे देबे हम अपडेट कर देबू आपको जुलाई मासर जो एमपीआर अपन देइचंती ता अनुसार आपनकर वर्तमान पेंडिंग केति अछि सर हमर 200 दी माल को कोन 200 टका दिए आगे सब से पहिला सब तो का लेगा सब सहायक ड्राइवर सब सर ना टाइम को तो second part is record correction again one of the key thrust area under FRA आ वर्तमान जाय 59% ROR correction हम करि पारछु आ जदि आपण देखिबे हमर स्टेटस जा रही छी एटा अपन देखि दियंतु आपनकर जो पेंडिंग स्टेटस रही डिस्ट्रिक्ट वाइज आरआर करेक्शन रे आरआर करेक्शन जो स्टेटस रही बहुत गुडा डिस्ट्रिक्ट तार इंप्रूवमेंट रिक्वायरमेंट रहउची आ बेसिकली प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज प्रेजेंट ना तो अदरवाइज प्रिंसिपल सेक्रेटरी इज क्वाइट ये जे आपण मान को जेतले फंड एलोकेट करा हितला आपण मान को डिमांड अनुसार तो वर्तमान जाय काहे कि एतिके आरआर करेक्शन जो प्रोग्रेस अछि एते पोर अछि only 2.6 lakhs हम करि परछु 4.5 lakhs that is around 2 lakhs title already pending for demarcation tanu this progress needs to be improved you know you need to
Binoy? He is in mute. Take it to one side first, finish it up. PPT. Oh, below PPT. They not him. It's okay. Time and again आमे different review meeting रे आपण मान को बार बार request करके आछियो जे हमर जो कन्वर्जेंस वर्तमान जे अछि प्रथम जिंस तो हम पाखे कन्वर्जेंस रो डिटेल्स ही नहीं जे आमे केते बेनिफिशियरी कवर करि सालुनी आपण जेति कन्वर्जेंस इनिशिएटिव नै चंती बोली भी रिपोर्ट करूचंती सेथिरे यदि आपण देखिबे 59% होची रूरल हाउसिंग प्रोग्राम इट इज गुड हम सीएम को विजन होची हाउसिंग फॉर ऑल किंतु तापरे भी जदि आपण फॉरेस्ट राइट एक्ट रो की मैंडेट को देखिबे लाइवलीहुड इज द की मैंडेट के जो एफआरए बेनिफिशियरीज माने रहिले तांकर लाइवलीहुड एनहांस हो आउ प्रिंसिपल सेक्रेटरी मैडम डायरेक्टर मैडम डिफरेंट रिव्यू मीटिंग रे रिपीटेडली आपण मान को रिक्वेस्ट करि आछंती जे हमरो मिशन जीविका रे आउ एमजीएनआरजी रे कन्वर्जेंसटा जो बळे अधिका हबो सेटा को नजर रे रखिया पई किंतु आपण जदि हमरो एनआरजी सॉफ्ट लास्ट टाइम जतले रिव्यू होइतला सेतबळे मु शेयर करथिली जे आपण जदि एनआरजी सॉफ्ट रे आउ हमरो एफआरए रो प्रोग्रेस रिपोर्ट जदि आपण टाली करी कि देखिबे ताले पाखा पाखी 60% टाइटल बेनिफिशियरी एजाई एमजीएनआरजी रे रजिस्टर्ड अछंती बोली तांको वेबसाइट शो करछि एटा हमें कैटेगोरिकली पीआर डिपार्टमेंट को इन लेटर आल्सो कम्युनिकेट करिछु तेनु आपण माने आपण को लेवल ले काइंडली डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी अछि ता सहित कोऑर्डिनेट करंतु जे हमरो जेति के एफआरए बेनिफिशियरी अछंती समस्त जे एमजीएनआरजी रे रजिस्टर्ड अछंती सेटा एटलीस्ट वेबसाइट रे शो करबा दरकार आउ ए जो मिशन जीविका और एमजीएनआरजी रे कन्वर्जेंस केते हला एटलीस्ट कन्वर्जेंस इनिशिएटिव केते निया हैची ताकू कैप्चर करिया पई हमें लास्ट जुलाई मास रे गोटे जो कन्वर्जेंस फॉर्मेट अछि ताकू मॉडिफाई करी कि हमें देइथुलु कन्वर्जेंस फॉर्मेट होता जोटा आपण एमपीआर रे दउचंती किंतु वर्तमान जदि हमें देखिबो केवल 7टी डिस्ट्रिक्ट ही सेही फॉर्मेट रे रिपोर्ट शेयर करचंती अदर डिस्ट्रिक्ट माने करू नाहंती जोथि पई कि हमको एटा रिपोर्ट करिया कष्ट हो जाउची जे मिशन जीविका रे वर्तमान हमरो केते बेनिफिशियरी कवर हिचंती आपण जानो जो जेहेतु मिशन जीविका इज एन स्पेशल इनिशिएटिव अंडर एसटीएससी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट तेनु हमर डिपार्टमेंट रो बारंबार फोकस रहउची हमर ए जो दीटा प्रोग्राम रहिला फॉरेस्ट राइट एक्ट आ मिशन जीविका ता भितरे केते हमें सिनर्जी आनी परची केते बेनिफिशियरी को हमें एफआरए टाइटल होल्डर को मिशन जीविका रे इंक्लूड करि परछो मिशन जीविका को हमें केते फॉरेस्ट राइट एक्ट टाइटल होल्डर डिफेंड करि परछो बहुत हियर जानिबे आपण जदि एबे जानिथिबे हमें मिशन जीविका अंडर रे गोटे स्पेशल प्रोग्राम टेकअप करछु मालकानगिरी रे सेतु जोथे पाखा बाकी 500 टाइटल होल्डर स्पेसिफिक एफआरए टाइटल होल्डर 500 फैमिली को हमें कवर करछु और नियर फ्यूचर रे अकॉर्डिंगली सही बळे लाइवलीहुड मॉडल हमें स्टेट रो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट रे पुट अप करिया पई चाहूछु किंतु कथा होची सेथि पई हमको ए डाटाबेस दरकार जोटा कि हमें आपण कोटु पाई पान हम आपण माने सही कन्वर्जेंस फॉर्मेट रिपोर्ट करूचंती किंतु पुराना फॉर्मेट करूचंती जोथरे आज जाय आपण इंदिरा आवास रिपोर्ट करूचंती जेतोल कि वर्तमान इंदिरा आवास योजना नाही प्रधानमंत्री आवास योजना आइ गलानी तेनु एई जो डिफरेंस 4 प्रकार रूरल हाउसिंग प्रोग्राम हे गलानी आपण माने वर्तमान जाय 3 प्रकार रूरल हाउसिंग अंडर रिपोर्ट करूचंती तेनु सब डिस्ट्रिक्ट मु कहूची आपण माने काइंडली से जो मॉडिफाइड फॉर्मेट रे कन्वर्जेंस फॉर्मेट जाय सेते रिपोर्ट करंतु जदि इश्यूज रहउची बा आपण पाखरे से फॉर्मेट मिस हे जायची आपण माने मते कम्युनिकेट करंतु मु आपन से फॉर्मेट पठै देबी किंतु एटी रिक्वेस्ट करची जे हेस फॉर आपण को जो नेक्स्ट एमपीआर आसीबो नेक्स्ट एमपीआर रे आपण मॉडिफाइड कन्वर्जेंस फॉर्मेट रे रिपोर्ट प्रोवाइड करंतु औ जदि पीपीटीजी हाउस होल्ड को पाखु जीबी बहुत एई जो टास्क ता एटा बहुत पुराना रहिलानी
वर्तमान भी आपण मान जो रिपोर्ट दौरान से अनुसार 3892 पीवीटीजी फैमिली को आईएफआर क्लेम आपण को लेवल पेंडिंग रोचे फॉर सेटलमेंट 3606 एट एसटीएलसी लेवल अच्छी आ 286 डीएलसी लेवल अच्छी तेणु एटलिस्ट पीवीटीजी को क्लेम्स क्लियर करिवार तो किसी असुविधा हबा कथा नुहे तेणु जदि किसी रही मो सेशन पर आपण प्रश्न करि परिबे जे एटा काहे कि ओडा पेंडिंग अछि रिक्वेस्ट होछि जे एटा केमति ऑटोमेटिक क्विकली ओडा डिस्पोज हे परिबो से विषय टे करिवे आ ऑलरेडी हैबिटेट राइट विषय रे हमें 2-3 राउंड डिस्कशन करलुनी 14 टा हैबिटेट राइट क्लेम हमरो डिफरेंट माइक्रो प्रोजेक्ट किवा डिस्ट्रिक्ट रे वर्तमान पेंडिंग अछि डिफरेंट लेवल ले तेणु जेमती केउंझर ताको तरफ रो गोटे वेलकम एक्शन नहीं बाय अप्रूविंग द जुआंग क्लेम एसटीएलसी लेवल ले सब डिस्ट्रिक्ट को मोर पुणी रिक्वेस्ट रहउची जे आपण माने जो हैबिटेट राइट क्लेम आपण को रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट रे फाइल हेची तार क्विक प्रोसेसिंग पे एक्शन नियंतु आ लास्ट रिव्यू मीटिंग रे डायरेक्टर मैडम जो रिव्यू मीटिंग नैथिले सेथिरे बारिपदा को मयूरभंज नोडल अफसर को कहाइतला जो मार्केटिया को रिटर्न करी जाइछि जो हैबिटेट राइट क्लेम फॉर्मटा डीएलसी रो एसटीएलसी को सेटा काहे कि रिटर्न करी गला कोन इन्फॉर्मेशन गैप रहिला तार गोटे रिपोर्ट डिपार्टमेंट को सबमिट करिया जोटा कि हमें वर्तमान जाए बारिपदा ऑफिस रु पाई तनु पीआईटीडी बारिपदा को एठी रिक्वेस्ट करिवि जे डायरेक्टर मैडम जोटा इंस्ट्रक्ट करिथिले जे आपण काहे कि पीवीटीजी क्लेम रिटर्न करी गला डीएलसी रु कोन गैप्स आपण आइडेंटिफाई करिथिले से रिपोर्टटा काइंडली शेयर कर देबे डिपार्टमेंट सहित आ बाकी रहिला कम्युनिटी राइट रिकॉग्निशन मध्ये आज सकाळू सबुठ बेसी हमें कम्युनिटी राइट रिकॉग्निशन ऊपर ही कथा आइछु कि यदि आपण देखिबे हमें वर्तमान जाए आसीबार पाखापाखि 15 वर्ष परे हमें 10% गाँ को ही तांको राइट दे पारिछु जोटा कि हमें सबुठ इम्पोर्टेंट राइट बोली कहूछु एक्ट अंडर रे हमें मात्र 10% गाँ रे पहुंची पारिछु आपण माने देखंतु आपण मान हमर जो अचीवमेंट रहिछि केतिक रहिछि हमें सीएफआर अगेंस्ट कोन करिछु बालेश्वर रे हमें आज जाय गोटाई भी दे पालु आपण मान जदि एठी देखिबे आपण मान गोटे बड़ डिस्क्रिमिनेसी आपण एठी भी देखिबे हमर पाखापाखि 12-15 टी डिस्ट्रिक्ट रे सीआर रो एरिया सीएफआर टू अधिक अछि जते बेले कि आपण आज रिसर्च पर्सन कहला बेले आपण बुझिथिबे निश्चित भाबरे सीआर बा जोटा फॉर्म बी रे लोक मागु जति दैट इज अ यूसुफ्रुक्ट राइट गाँ रे नदी दे अछि लोक सीटा व्यवहार करिवे सेथि पय अधिकार मागु छथि गाँ रे घास पड़ियाट अछि जंगल जमी रे अछि सेठी लोकन को गाई चरिवे सेटा साने गोचर भाव रे व्यवहार करिवे से व्यवहार करिवार अधिकारटा साने फॉर्म बी रे मागु छथि तेणु जदि भी आपण फॉर्म बी रे एरिया दउछन्ती दैट इज नॉट रॉन्ग दियो किंतु जेतुर एरिया रो कांसेप्ट रहउछि सीएफआर में कहउछे जोथरे हमें गाँ रो ट्रेडिशनल बाउंड्री को डिफाइन करूछे जे एई गाँ रो सीमाटा एई पहाड़ रु एई नाळ जाय अछि जेतोल एया रहुछि आपण मते कोंतु को मान केमिति हाबरे एमिति हो जे हम सीएफआर रो एक्सटेंटटा सीआर टू कमी जाउछि तेणु सबू डिस्ट्रिक्ट टिके सेटा नजर रे रखंतु हमें गोटे गाँ रे गोटे ही सीएफआर राइट दे परिबा मे बी मल्टीपल सीआर राइट आपण जो दउचंती तरा जो आपण कहउचंती हमर अच्छा एमिति कोन होउची जे आपण गोचर पई गोटे पटा माछो पई गोटे पटा पूजा परबाणी करिया पे आउटे पटा एमिति कोन हमें प्रत्येक गोटे राइट पे गोटे पटा दउचु जने बस स्टैंड पे भी पचारि छ क्वेश्चन रे अछि बस स्टैंड पे दे परिबा ठीक से पचारि छथि इग्नोर कर देबी किंतु क्वेश्चन रे अछि एसएसटी रिसर्च सर्टिफिकेट टाइटल रो कॉपी अछि डाउनलोड करि अपन जो देखिबे लास्ट 3 वर्ष भितरे हमें पूरा डिस्ट्रिक्ट पूरा स्टेट रे मात्र 521 टा सीएफआर टाइटल देछि बोला 3 वर्ष भितरे अपन इमेजिन करो 30 वर्ष रे जदि 30 टा डिस्ट्रिक्ट 3 वर्ष 90 यूनिट हला 9521 डिवाइडेड बाय 90 केतेटा हम वर्ष रे करि पारछि तेणु एई जिनसोडा अपन मानटे नजर रे रखंतु 705 सीएफआर टाइटल
जोटा आपण को एमपीआर जोटा आपण सबमिट करिसंती सेतरे जहा देखा जाउची 705 आफ्टर अप्रूवल डिस्ट्रीब्यूशन पे डीएलसी लेवल पेंडिंग अछि तेणु जो रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट मान को मते लागुनी आवश्यकता अछि मु सेही सीट आपण देखैबी जे को डिस्ट्रिक्ट रे सेटा पेंडिंग अछि एई सब डिस्ट्रिक्ट रे मयूरभंज ढेंकानाल संबलपुर सुंदरगढ़ कलाहांडी कोरापुट मालकानगिरी नुआपड़ा नवरंगपुर एथिरे आफ्टर अप्रूवल 705 सीएफआर टाइटल एई सब डिस्ट्रिक्ट मान पेंडिंग अछि आपण मान को रिक्वेस्ट करछि आपण माने क्विकली नेक्स्ट 10-15 डेज भितरे एउडा डिस्पोज करिया पई चेष्टा एक्शन नियंतु एई जो 12टा डिस्ट्रिक्ट मु कहूति सेतोळे आपण ए 12टा डिस्ट्रिक्ट देखंतु जोथरे आपणकर सीएफआरआर एरिया बा जोटा आपण फॉर्म सी रे लोक क्लेम करिसंती आ देइसंती तारो एक्सटेंट ता फॉर्म बी रे जो एरिया देइसंती ताटू कम अछि कटक देवगढ़ अनुगुल बलांगीर झारसुगुड़ा संबलपुर गजपति गंजाम कलाहांडी कोरापुट मालकानगिरी नुआपड़ा आपण काइंडली ए जिंसडा देखिबे जे आपणकर जेतिक एरिया आपण सीआर रे देइचंती सीएफआरआर रे कम हिची सीआर गोटे यूसुफुक्त राइट जोठी लोकों को आमे रिसोर्स व्यवहार करि परिबे बोली अधिकार दउछु जे आपण एक नदी रु पानी नै परिबे आमे अधिकार दउछु फॉर्म सी रे आपे ताकर ट्रेडिशनल बाउंड्री ऊपर राइट दउछु तेनु जतले एरिया रो कथा आसुची दैट्स कम्स इन फॉर्म सी बा जोटा आमे कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट कथा कहउछु तेनु निहाती भाबरे कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स फॉर्म सी रो एक्सटेंट ता अधिक हवा कथा एठी आपण एक्सटेंट ऑफ एरिया भी देखंतु हमरो जदि जेतिक टाइटल डिस्ट्रीब्यूट हेची सीएफआरआर रो ताकू जदि हमें काउंट रे नबा हमर एवरेज एरिया आछि 72 एकर आ जदि मु सेथरु मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट को बात कर देबी ताहले से एवरेज ता रेस्ट 29 डिस्ट्रिक्ट पई जेतिक टाइटल हमें देइचे सेटा 32 एकर सेइचो जानली माने एटा तो हमें कहि परिबु जे लोक 32 एकर सु सीएफआर एरिया ता कम हेई परिबोनी बोली कथा जोटा गोटे गोटे रेवेन्यू गाँ रो भी जो बाउंड्री रोची ता भीतर आमे देखुछु एटलीस्ट 50-60 एकर रो फॉरेस्ट लैंड रोची तेणु आमे आशा करछु जे सीएफआरआर एरिया डा एते छोट होबा कथा नै एटलीस्ट आमो बळे स्टेट रे जोटी आमे कहूछु 32,562 गाँ अछि जोतरे एफआरसी पोटेंशियल अछि आ पाखा पाखी 19,000 गाँ अछि जोटा की फॉरेस्ट फ्री विलेजेस तेणु आमे आशा करछु ए जो हमरो सीएफआरआर एरिया मैपिंग रो जो एक्सरसाइज रहिछि सेटा आउ बेटर रहिबा आ जो एक्सटेंट ता जो रिकॉग्नाइज करूछु हमें सेटा आउटे अधिका बोली आ ऑलरेडी हम प्रीवियस आरपी शेयर कर छारचंती जे बहुत जगह रे हमें वीएसएस को सीएफआरआर राइट टाइटल देइछु बा किछि जगह रे सीएफआरआर एरिया भीतर गोटे स्पेसिफाइड एरिया डिडक्ट करी रखि दिया आइछि वीएसएस पई जे जंगलटा वीएसएस रो एटा वायलेट करछि एक्ट रो स्पिरिट को तेणु यही एक्शन गुडा नोडाल अफिसर माने काइंडली केयर करंतु अदरवाइज पुणी केतल पिटिशन केस आसीबो डिपार्टमेंट को आसीबो एटा आपन को पई आमो पई समस्त पई असुविधा क्रिएट करबो कारण अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट बीएसएस रो कोनोसी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी नाही एटा पखा पाखी 9 मास हलानी हमें आपण जानिथिबे गवर्नमेंट करो कालिया योजना चलीची आ हुए तो नियर फ्यूचर रे गवर्नमेंट सेही बळा आउ किछि वेलफेयर एक्टिविटीज फार्मर्स मान को पई नै कि आसुची आ फॉर दैट आउ केवल सेही पर्पज रे हमें आपण को कृषक ओडिशा डाटाबेस मागी से माने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तरफ गोटे स्पेसिफाइड फॉर्मेट हमको दिया हेतला जोथरे से माने एफआरए टाइटल होल्डर्स मानकर डिटेल मागी थिले जोटा कि से माने कृषक ओडिशा डाटाबेस रे अर्थात एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट डाटाबेस रे इंटीग्रेट करिवे एवं अपकमिंग डेज रे हमर एफआरए टाइटल होल्डर्स को मानको पई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ता तरफ स्पेसिफाइड पॉलिसी फॉर्मुलेशन करिवो किंतु यदि वर्तमान जाय देखिबा पाखा पाखी 9 मास परे 9टा डिस्ट्रिक्ट हमको कंप्लीट डाटा दे पारछंती समान जेति की टाइटल डिस्ट्रीब्यूट करिसंती अपन बाकी 21 जन डिस्ट्रिक्ट देई पारी नाहंती एटा जेति की ये आमो लेवल ले गोटे
इंप्रेशन ये भी क्रिएट होची जे आमे जो टाइटल डिस्ट्रीब्यूट करिजो तारो किछि डिटेल्स आमो पाखरे अवेलेबल नाही जोथि पाई कि आमे डाटा सबमिट करि पारु ना कारण सेकेंड किछि रीजन आमे देखि पारनु डाटा सबमिशन न हवा तेनु काइंडली मु आम बाकी जो 21 स्टेट डिस्ट्रिक्ट रहिले आउ किछि डिस्ट्रिक्ट सबमिट करिचंती कि सेतरे किछि इंफॉर्मेशन गैप रहउची या लाइक केस रिकॉर्ड नंबर जोथि से माने देई पार नांती आ आमे सबमिट करि पारनु तेनु काइंडली समस्त रिक्वेस्ट होला एटा बहुत लंबा समय हे गलानी ए इंफॉर्मेशन ता आमे देई पारिनु काइंडली आपण समस्त एडिक्वेट स्टेप नियंतु आमे इंफॉर्मेशन ता केमती फील्ड रु आनिबा स्टेटस ऑफ FRC reconstitution as well as reconstitution of DLC STLC 3 months बैक गोटे चिट्ठी जाइछला आपण मानकू जे पंचायत इलेक्शन परे डिफरेंट जगह रे हमर PRA रिप्रेजेंटेटिव माने चेंज हेचोंती तेनु STLC DLC as well as जेहेतु गोटे लंबा मोर देन 10 पीरियड्स हला हम FRC रिकन्स्टिट्यूट हे सालानी तेनु से सब FRC को पुणी आते रिकन्स्टिट्यूट करिया पे कि जदि हमें वर्तमान देखिबा हमें STLC DLC रिकन्स्टिट्यूशन स्टेटस 13टा डिस्ट्रिक्ट रु पाइछु जेतेबेले कि FRC कोन केते रिकन्स्टिट्यूशन हेछि तार स्टेटस मात्र 4टा डिस्ट्रिक्ट रु पाइछु आपण जोडा लेफ्ट हैंड साइड रे देखुचंती एही 13टा डिस्ट्रिक्ट रु हमें तांकर STLC आउ DLC रिकन्स्टिट्यूशन रो रिजोल्यूशन आउ के मेंबर से डिटेल्स पाइछु जेतेबेले कि ए 4टा डिस्ट्रिक्ट रु ही हमें पाइछु तांकर FRC रिकन्स्टिट्यूशन स्टेटस देखो FRC रिकन्स्टिट्यूशन इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस एटा टाइमली इट विल कंटिन्यू सेई मास 1000 हैला आर मास आउ 1000 हो चलियो किंतु कथा होची आपण त एमपीआर रिपोर्ट करूचंती बा इन द मीन टाइम आपण ताकू आपण रिपोर्ट करंतु सो दैट इट विल बी बीन लूप ऑफ द डिपार्टमेंट जे फील्ड रे FRC फॉर रिकन्स्टिट्यूशन प्रोसेस ता कंटिन्यू अछि आउ जो आपण माने एमपीआर संगे गोटे आउट नुआ फॉर्मेट गला पाखा कि 1.5 वर्ष पूर्व आपण तो शेयर करा आइछि सेक्शन 31A रे जोटा आपण दउचंती फॉर हैबिटेशन फॉर कल्टीवेशन किंतु आमे देखुछु किछि डिस्ट्रिक्ट रे 7टा डिस्ट्रिक्ट रे आपण किछि डिस्ट्रिक्ट दउ नाहंती 7टा डिस्ट्रिक्ट से फॉर्मेट सबमिट ही कर नाहंती आउ 13टा डिस्ट्रिक्ट रे फॉल्स माने जहां रिपोर्टिंग होची दैट इज फॉल्टी रिपोर्टिंग मींस हमें सेक्शन 31A रे रिपोर्ट करूछु हमें हैबिटेशन पई केते पट्टा देलु कल्टीवेशन पई केते पट्टा देलु आ जो पुराना टाइटल जो एमपीआर में दउथलु सेथरे हमें रिपोर्ट करूछु जे हमें केते पट्टा देइछु मान धरा जो फॉर अनुगुल जदि मु एग्जांपल नेबी धरा जो अनुगुल डिस्ट्रिक्ट रे 100टा पट्टा दिया आइछि 100टा पट्टा हुए तो केवल हैबिटेशन पई दिया जाय थाई पारे बा केवल कल्टीवेशन पई दिया जाय थाई पारे बा ता भितरु 40टा पट्टा हैबिटेशन पई एक्सक्लूसिवली हैबिटेशन पई 40टा पट्टा एक्सक्लूसिवली कल्टीवेशन पई 20टा पट्टा बोथ हैबिटेशन आ कल्टीवेशन पई दिया जाय थाई पारे तेनु इन केस आइडियल ऑफ द सिचुएशन ने आपन को एमपीआर रे जो 100टा आपन कहउछन डिस्ट्रीब्यूट हेची सेक्शन 31A रे भी डिस्ट्रीब्यूशन ता 100 ही 100 करिया कथा ताटू अधिका बरं 100 करिवो कम तो 100 करिवनी किंतु आपण 13टा डिस्ट्रिक्ट आमे एमिति रिपोर्ट करूछु जे आमे एमपीआर रे 100 करूछु आमे 100टा टाइटल डिस्ट्रीब्यूट करिछु इतले सेक्शन 31A को आमे कैलकुलेट करूछु आपण को टोटल डिस्ट्रीब्यूशन 70 80 90 एमती हे जाउछ मु भाबुछि आपण मो कथाटा बुझी पाथिबे जे एमपीआर रे आमे रिपोर्ट करूछु टोटल टाइटल डिस्ट्रीब्यूशन केते हला यदि टोटल टाइटल डिस्ट्रीब्यूशन 100 हेची ताले एमिति हे जाय पारे 100 टाइटल आमे हैबिटेशन पई देइथिबु बा 100टा टाइटल आमे एक्सक्लूसिवली कल्टीवेशन पई देइथिबु बा 100टा टाइटल बोथ हैबिटेशन आ कल्टीवेशन पई देइथिबु बा सेही भितरु किछि आमे खाली हैबिटेशन पई देइछु किछि खाली कल्टीवेशन पई देइछु किछि टाइटल आमे बोथ हैबिटेशन आ कल्टीवेशन बोथ पई देइछु जोटा बोथ देइछु सेटा फॉर हैबिटेशन ने भी काउंट हबो फॉर कल्टीवेशन ने भी काउंट हबो तेनु ओवरऑल फिगर ता एमपीआर रे जो फिगर आमे देइछु जे एतिकी टाइटल डिस्ट्रीब्यूट हेछि आइदर ता संगे समान हबो बा ताटू अधिका हबो ताटू कम केबे मध्ये हबो नै आ जो जिनसडा रहितला डाटाबेस रो आपण समस्त जानिथिबे डायरेक्टर मैडम सकाळे आपण समस्त बहुत प्रेज करतले जे आमे मो सरकार डाटा गवर्नमेंट रो वर्तमान प्रत्येक कार्यक्रम रे जोठी बेनिफिशियरी बेनिफिटेड होउचंती सरकार तांको तो डायरेक्टली टच रे रहउचंती
10% प्रत्येक ऑफिसर 10% बेनिफिशियरी को कॉल करिवार मैंडेट रही सेमान ताको कॉल करके पचारिबे आ फॉर्चुनेटली वी आर वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग माने जदि कहवा आम फॉरेस्ट एक्ट अंडर जो बेनिफिशियरी को डिटेल्स हम आज जाए पाइछु ताकोटा हम नेगेटिव रिमार्क प्राय काटू पाइनु बा दि चारटा केस ही आछि जोतरे नेगेटिव रिमार्क आछि अदरवाइज आपण माने जो इन्फॉर्मेशन देइचंती सेटा ट्रुथ रहिछि किंतु कथा होछि मो सरकार डाटा हमें पाइछु ही बहुत कम हमें जति कि मो सरकार डाटा देइछि बोली मैडम सकाळे कहि कि खुशी होतले हमें बेसिकली जो कृषक ओडिशा डाटाबेस जो अछि सेइटु किछि डिराइव करथिलु आ टीएसपी डिस्ट्रिक्ट हमर जोठी एफआरएसएल फॉर्मेशन हेछि बेसिकली रायगड़ा मालकानगिरी केउंझर कोरापुट एवला नवरंगपुर किछि डिस्ट्रिक्ट हमें मो सरकार डाटा पाइछु अदरवाइज नॉन टीएसपी डिस्ट्रिक्ट हमें मो सरकार डाटा जो अनुसार पाइबा कथा प्राय पाइ तेणु समस्त रिक्वेस्ट होला काइंडली टिके मो सरकार डाटा और कन्वर्जेंस डाटा जति डिटेल्स जहां मगा होछि एटा टाइमली टिके रिपोर्ट करिया पई और बारंबार रिक्वेस्ट पर भी प्रत्येक मास रिव्यू रे जे बाय 5th आपण माने काइंडली एमपीआर सबमिट करि दियंतु हमें आज डेट रे भी 4टा डिस्ट्रिक्ट रु जुलाई मासर एमपीआर पाइ अब बहुत जन आउ पाखापाखि 6टा डिस्ट्रिक्ट हमको लास्ट वीक ही देइछथि तेणु पुणी मु रिक्वेस्ट करछि सब डिस्ट्रिक्ट को काइंडली एमपीआर सबमिशन टा बाय 5th ऑफ सक्सीडिंग मंथ एंश्योर करतु आउ these are IFR rejected claim it is already discussed hi salani it is all from my side ऑन करदन जति किछि क्वेश्चंस अछि आपन साइड रु आपण माने पचारि परिबे Many questions love the same participants will be there 6 o'clock 8 मिनट अरे ठीक है जल्दी जल्दी सर ये ठीक है ये रेडी सब खेलना ये अनम्यूट है जदि कहारी किछि प्रश्न अछि आपण माने पचारि परिबे हमें 5-7 मिनिट आपण आंसर दे परिबो हेलो नमस्कार आज्ञा आईटीडीए पीआईटीडीए तो हमरो किछि अर्बन लोकल बॉडीज अछि लाइक गुणपुर और गुडारी एमती केतेगुडे अछि अर्बन लोकल बॉडीज सेथरे केतेगुडे इंडिविजुअल क्लेम्स अछि बोली समान कहउछंती आज्ञा हमें कोन करि परिबा आ सेकंड कथा होछि हमर जो पहाड़ किस्म अछि सेगुड हम केमती सेटल करिबा अच्छा रायगड़ा डिस्ट्रिक्ट रे तो पहाड़ किस्म रो कथा आसुची मो जदुर मने अछि सर पहाड़ किस्म रो क्लेम गुडा को हमें रिजेक्ट करिया बोली लास्ट गोटे कोन छोटे मीटिंग रे डिसीजन निया आइतला आ अकॉर्डिंग रे रायगड़ा रे लास्ट 2 इयर्स भीतर बोते एक्शन भी ऑलरेडी निया गलानी पहाड़ किस्म एक्सपीआईटी डे थिला समय रे भी मु जतले जाइतली रायगड़ा डिस्ट्रिक्ट सेतबेले भी किछि क्लेम ऑलरेडी रिजेक्ट हेई सारितला आ अदर पहाड़ किस्म आर इन प्रोसेस बोली मु जानितली जदि सेतरे आउ किछि डिफिकल्टीज रहिछि सर मु जानि आ सेकंड कथा रहिला व्हाट जो आपण कहउछन्ती अर्बन बॉडीज रे क्लेमेंट्स रहिछन्ती सर फॉरेस्ट एक्ट इज एप्लीकेबल इन म्युनिसिपैलिटी एरिया जोन्स स्पेसिफिक गाइडलाइन अछि जे हमें फॉरेस्ट एक्ट कमिटी अर्बन लोकल बॉडीज रे कॉन्स्टिट्यूट करि परिबा आ लाइक जेमति हमें देखुछु रूरल एरिया रे हमें क्लेम प्रोसेस करूछु समान प्रोसीजर लोकल बॉडीज रे जो एफआरसी फॉर्मेशन हबो ता थरे क्लेम प्रोसेस हेई परिबो हेलो एडीडब्ल्यू जयपुर आज्ञा सर कोंतु सर नमस्कार नमस्कार कौन सर हमरो सर जो मैप प्रिपरेशन टा एफआरएसएल लेवल रे हमरो किछि से विषय रे ट्रेनिंग दिया जायनी मैप प्रिपरेशन टा गुडे बहुत इंपोर्टेंट पार्ट रहउची आईएफआर आ सीआरसीएफआर रे किंतु हमरो डीओ अछंती कोऑर्डिनेटर गुडा अछंती मैप प्रिपरेशन रे से माने किछि करि पारु नांती तो मो रिक्वेस्ट करिवे जे मैप प्रिपरेशन पे एमती गुटे वेबिनार हो सर मैप प्रिपरेशन फॉर आईएफआर सीआरसीएफआर सर हां सर
सेकंड हैला मो एटा चैट बॉक्स रे भी देइथिले आपन टिके ये जानि परलेन बोधे एटा हेई परलानी तापर नेक्स्ट होची सर कैपेसिटी बिल्डिंग हेलो आज्ञा सर कोन सर कैपेसिटी बिल्डिंग जोटा के एफआरसी लेवल रे किछि हमर इनिशिएटिव निया नै हेइनी एबे एफआरसी गठन चली छी किंतु हमर जो एफआरए सेल अछि एफआरए सेल रे जो माने अछंती से माने वेल ट्रेन्ड हवा कथा जे से माने एफआरसी लेवल रे जेमती ट्रेनिंग दे पारबे पर्टिकुलरली कम्युनिटी राइट्स अब कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट सेटा ठीक भाबरे हेई पारुनी सर नहीं सॉरी ठीक है सर मु आपनकर ए जो कंसर्न टा रहला इट इज ए वेरी नोवेल कंसर्न सर अब मु एटा डिपार्टमेंट रे भी परस्यू करिवे जिंसटा आपन भी सर यदि आपन साइट उडे चिट्ठी कर दियंतु जे भला हमें कैपेसिटी बिल्डिंग एफआरएसएल्स रो चाहूचु आउ एही स्पेसिफिक सब्जेक्ट रो तांको ट्रेनिंग हो बोली चाहूचु ताले हमें सर अकॉर्डिंगली हमें हम लेवल भी सर स्टेप नेक्स्ट हला सर हमें एफआरए एटलास पाइछु सब सब तहसील मान को सेल मान को हमें शेयर करी देछु किंतु तार यूज टा काको जणा नहीं हमको टिके भल करी एफआरए एटलास जोटा हमें पाइछु एटलास पाइछु किंतु तार यूज टा केमिति यूज करिवो सेटा से विषय रे हमको ट्रेंड करबा पड़ियो एफआरए सेल को आज्ञा एजाली प्रोफेसर दुटा मेजर एक्सपेक्टेशन थिला एफआरए एटलास रो जे एफआरए एटलास गोटे रेफरेंस डॉक्यूमेंट हिसाब रे निया जको फॉर एक्सपीडिएट रिकॉग्निशन ऑफ कम्युनिटी राइट दुटा में को हां हां कोन कहउतली 10% टोटल ये हिची माने हमर सीएफआर रिकॉग्निशन हिची सेटा हमें कंपेयर करिछु दुटा पोटेंशियल विलेज जो 32562 पोटेंशियल विलेज मैपिंग हिची मु ताकू ही कंपेयर करिथिले वी आर टेकिंग दैट एज ए यार्डस्टिक फॉर कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट रिकॉग्निशन अपन सेटा को गोटे अपन बहुत एविडेंस टूल हिसाब रे हो बा ऑपरेशनल टूल हिसाब रे हो अपन ताकू बहुत पर्पस पे यूज करि परिबे ब्लॉक वाइज एक्चुअली सेथरे पूरा एंटायरली ब्लॉक वाइज आपण पाई जिवे कि केतिकीटा गां पोटेंशियल अछि टू अप्लाई फॉर द सीआर एंड द सीएफआर राइट्स विलेज सेटा हमें बाहर करछु एक्चुअली को विलेज रे जीव हमें जयपुर सब डिवीजन रे बाहर करिछु किंतु फर्दर यूज टा हमको सेटा टी डिफिकल्ट होउची जानिबा पे से विषय रे आउट के आपण टिके ड्यूरिंग ट्रेनिंग आउ थरे केबे उटे एटा क्लैरिफाई कर देबे ठीक अछि नेक्स्ट हला हमर सर हमें जो 31H गोटे हमें विलेज रे करछु ऑलरेडी दुईटा विलेज सरेलुनी कन्वर्सन ऑफ अनसर्वेड विलेज इनटू रेवेन्यू विलेज हमें ऑलरेडी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को गोटे सबमिट करि दैछु सेठी कोन हमर टिके डाउट रहउची हमें सेटा सीएलएम प्रोसेस रे करिछु जीपीएस प्रोसेस रे करे आइनी सीएलएम प्रोसेस आउ सीएलएम आउ जीपीएस प्रोसेस से केमिति कोन करा जिवो सेटा क्लैरिफिकेशन हमर नाही हमें वेदर सेटा जीपीएस प्रोसेस रे करिवो ना सीएलएम प्रोसेस रे करिवो हमर डिस्ट्रिक्ट रो टेक्निकल हमको आईटीडीए एंगेज करछंती एफएस कोरापुट को तांकर गाइडेंस टेक्निकल गाइडेंस रे हमें करिछु तो सीएलएम हमर एफएस प्रोसेस रे जोटा सीएलएम प्रोसेस से करछु हमर टिके डाउट रहउछि सेटा वेदर करेक्ट हबो कि नै हमर टिके डाउट रहउछि सेटा से जोटा के जीपीएस प्रोसेस रे हमर कोऑर्डिनेटर हो कि जो डीओ अछंती माने मैप तैयारी करबारे बहुत डिफिकल्ट फेस करू छथि तो ता विषय रे पूरा कंप्लीटली गोटे ट्रेनिंग दरकार संगो हमर सेल को ठीक है सर क्यों सर देखंतु माने हमें डेफिनेटली अपन जो सजेशन देला हमें सेही अनुसार ट्रेनिंग प्लान करिया पे चेष्टा करिवु किंतु कथा होची यूज ऑफ जीपीएस होइला सर यूज ऑफ जीपीएस इज नॉट ए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट अंडर फॉरेस्ट एक्ट हां कोनोसी पर राइट रो रिकॉग्निशन पई जीपीएस रो यूज ए मैंडेटरी कोनोसी पर राइट रो रिकॉग्निशन पई जीपीएस को मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहे तेनु सर जदी जीपीएस रो यूज हेई पाउछ इट इज वेल एंड गुड जदी हेई नि हमें 31H रे जोटा करछु जीपीएस रे ही करिछु सब मैपिंग गुडा को जीपीएस रेवेन्यू ऑफिशियल्स प्रेजेंट थिले सर राजू को हां रेवेन्यू ऑफिशियल प्रेजेंट थिले किंतु एफएस सोसाइटी जोटा अछि कोरापुट से हमको कंप्लीटली टेक्निकल गाइडेंस दिया देई छंती किंतु रेवेन्यू वाला प्रेजेंट थिले नो डाउट
किंतु तांकर टेक्निकल गाइडेंस रे हेची 319 टा ठीक है सर मु काली डिटेल इटा डिपार्टमेंट रे आउट डिस्कस करके आपन को ये करी ओके ओके थैंक यू सर थैंक यू बाकी रिजल्ट काली हम थैंक यू फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स आउ आपन मानकर जहा अदर क्वेश्चंस रही छी जदि आपन टाइप करछन हमें काली रो सेशंस रे डिस्कशन करि परिबा खाली पूरा डिटेल डिस्कशन अछि वर्तमान हम इतरे डायरेक्टर सर पुणी आसी पहुंचती मु सर को रिक्वेस्ट करी कंक्लूसिव रिमार्क्स अच्छी देदेवा आउ आसंता काली जो ऑफिसर्स माने एवं हम फील्ड फंक्शनरीज जॉइन करछन्ते मु त नथिले वी हैड अ मीटिंग आई हैड गॉन टू गवर्नमेंट मु भाबुची आपण मानकर ए जहा किछि डिस्कशन करले गिरिराम का संगे कि हम विश्वरूप संगे आपण निश्चित भाबे केता अनरिजॉल्वड क्वेश्चंस रिजॉल्व हेथिबो आउ केते गोटे क्वेश्चन मध अनरिजॉल्वड हे कि स्टिल थिबो कारण one person is not competent to answer everything so kali we will also have 2-3 experts with us आपन जहां अनरिजॉल्वड क्वेश्चन अछि कौन से संकोच न करिकरे प्लीज आस्क देम टुमारो एमते भी किसी क्वेश्चंस रहि जिवो जोटा कि इवन काली मध्ये हम एक्सपर्ट माने तो ताको रिजॉल्व न करि पारंते and subsequently we will get back to you if some questions remain unresolved मो जति के लास्ट मिनिट रे आसी के मो सुनली आपण माने जीपीएस केमते आपण ऑपरेट करिवे तापर ट्रेनिंग पे आपण चाहू छन्ते आमे देखंतु आमे एफआरएसएल जो माने फंक्शनलीज अछन्ते हम कोऑर्डिनेटर्स अछन्ते तांका पे हमें गोटे दिन रो ए 10 तारिख भीतर आमे करिबु केमति जीपीएस आपण यूज करिवे ताको हमें डेमो देखै के will bring our experts who will talk to you and you can ask him as many questions as you feel हमें जेमते उपरबड़ा करूछे 3 टा 6 टा काहरी काम अफेक्टेड हबो नहीं सो से भलिया हमें मध्य 3 रु 6 करिबा one of these days may not be day after tomorrow maybe after a week and I thank everybody for attending this training program this training program so meticulously it is already 15 minutes past 6 I hope that you have benefited and I'm sure you will benefit even tomorrow when the experts come and interact with you thank you tomorrow we'll again join at 3 join at 3 yeah thank you